में हमको अभी आज़ादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आज़ादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आज़ादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आज़ादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आज़ादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। सब जांचा है, परखा है, समझा है, इसलिए मेरे समझदारी का नाम इंट्रा है। टाटा की नई इंट्रा V20 पिकअप है इंडिया की पहली बाय फ्यूल पिकअप, जो दे आपको बढ़िया ड्राइवेबिलिटी, सुपीरियर ड्राइविंग कंफर्ट, ज्यादा लोडेबिलिटी, सबसे ज्यादा माइलेज, जो दे सबसे ज्यादा रेंज। टाटा इंट्रा V20 पिकअप, सब कुछ उठाए, हर दिन जिताए। પાછા જઈએ, 2000 માં પાછા જઈએ, 23 વર્ષ પાછળ જઈએ, તો સુરેન્દ્રનગર માટે આ સ્વપ્નું હતું, એ સ્વપ્નું આજે સાકાર થયું છે। હું હરદેવસિંહભાઈને હૃદયપૂર્વક બહુ શુભકામનાઓ અને અભિનંદન આપવા માંગુ છું। 1960 થી આ બેંક બની અને ગુજરાતમાં સૌથી વધુ દુકાર પડવાવાળું આ ક્ષેત્ર હતું। All right, moving on to a lead that's now coming in the Israel embassy blast probe. The NSG would be giving seal blast sample report to the Delhi police in explosion near the Indian embassy case. Now, top officials in the NSG's bomb squad team say that this report has been kept highly sensitive and a sealed report would be handed over to the Delhi police itself. So, another lead coming in as far as the probe into the embassy incident is concerned. The NSG will now be submitting sealed incident sample report to the Delhi police personnel. So the NSG that would be submitting the sealed blast sample report to the Delhi police in the explosion case related to the Israel embassy in the national capital. In fact, top officials in the NSG's bomb squad team say that this report has been kept highly sensitive and a sealed report shall be handed over to the Delhi police itself. So, yet another lead in this case. Also note that 2 suspects have already been identified by the Delhi police personnel in relation to the Israel embassy blast case. All right, here's a look at news in brief from across the country. Indian Navy has proudly unveiled the new design of Admiral's epaulets, showcasing the nation's maritime legacy. The unveiling symbolizes Indian Navy's pride in its heritage and innovation. Millions of visitors are anticipating a visit to Ayodhya after its inauguration on the 22nd.
On transport facilities for the visitors, UP Transport Minister said that the department would conduct a bus depot to provide airport-like facilities with VIP lounges in Ayodhya. Ahead of Ayodhya Airport inauguration, Union Minister for Civil Aviation Yogi Adityanath said that Ayodhya Airport aims to facilitate convenient visits for a significant number of tourists to the Ayodhya Ram Temple. यूनाइटेड का अपना मामला है, वो वहाँ की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। हम आज भी तैयार हैं कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर चुनाव लड़े, दोनों को हराने का काम है। JDU में जो खुल के सामने आ गया है सर। देखिए, नेता तो सिर्फ एक ही है, नीतीश कुमार, वहाँ दूसरे और तो है नहीं। तो नीतीश कुमार जी कभी आरसीपी जी को अध्यक्ष बनाए, कभी ललन जी को अध्यक्ष बनाए, कभी और किसी को अध्यक्ष बनाएंगे, ये उनका दायित्व है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हम पूरे महागठबंधन और इंडी गठबंधन के लोगों को हराने के लिए तैयार हैं। Fall due to hard weather condition, but these troops of the BSF are ensuring that any attempt of the adversaries foil, no matter how challenging the weather conditions or the attempts from the adversary are. There have been frequent attempts by the Pakistan to push in terrorists into the Indian territory, but the allied troops of the BSF have foiled all the nefarious designs. If you look at the weather conditions, it's completely packed due to the fog that has prevailed in the area very close to the Chenab River. But these troops of the BSF, they are keeping a strict eye on each and every development that is taking place from across the border, because on the left side is the Pakistan that always mounts troubles for the security forces, and that's why they are carrying out the searches in the area, the ground patrol, and all this ensures that any attempt of the adversary can be foiled well within the time. Important to mention that this stretch that is very close to the line of control has always been prone to the activities of Pakistan. Look at news in brief. Prime Minister Modi set to inaugurate multiple development initiatives valued at over 11,000 crore rupees in Ayodhya. The range of projects aimed at boosting Ayodhya's development and infrastructure include airport and redeveloped railway station. Prime Minister Modi is scheduled to conduct a roadshow in Ayodhya tomorrow. After inaugurating the airport, Prime Minister Modi will be holding a 15-kilometer roadshow as well. Prime Minister Modi will be unveiling a newly built Ayodhya airport tomorrow as well. Ahead of its inauguration, paintings depicting Lord Ram and Goddess Sita have also been painted on the highway wall near Ayodhya airport. Ayodhya Dham Junction is being illuminated in preparation for Prime Minister's visit tomorrow. The Prime Minister will inaugurate Ayodhya Dham Junction and flag off new Amrit Bharat train and 6 new Vande Bharat trains as well. Ahead of the consecration ceremony of Ayodhya Ram Temple, 2,100 women performed a puja said to be a ritual believed to bring auspiciousness before commencing any significant endeavor. To enhance the look of Ayodhya Ram Temple's aesthetics, women workers were seen polishing stones
designated for temples construction, contributing to its beautification efforts. And tracks widen in India alliance over PM face. Now Siddaramaiah pitches for Rahul as Prime Minister face. State set for the Grand Ram Mandir unveiling. Prime Minister Modi to visit Ayodhya tomorrow to launch projects. There's a reason why over 200 new age companies scout for talent from our campuses. It's because we've future-proofed our courses with a higher technological baseline, with a thrust on specialized industry skills and tech innovation skills. The Amrita School of Engineering. Tomorrow's engineering today. Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. गोल का स्टाइलिश पंखा सिर्फ हवा ही नहीं देता, आपके आलीशान घर के कोने-कोने में ठंडी हवा के झोंके पहुंचाता है। कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर को सुंदर बनाएं। 5 स्टार BLDC कूल फैन से बिजली भी बचाएं। समय आ गया है घर के पंखे बदलने का और कूल फैंस घर लाने का। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। Helps beat sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief. मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प विकसित भारत। As Vallabhbhai Patel passed away, Nehru could not tolerate his cabinet colleague K.M. Munshi taking part in the Somnath temple reconstruction. So I think Nehru, in the name of secularism, wanted India to detach itself from its Hindu roots. Jawaharlal Nehru's tolerance of Hinduism vanished after Sardar Patel. He politically tolerated Hinduism, and he was, according to me, a fake secularist who did not want Hinduism in India. Everything related to the Hindus, he only scorned.
us breaking right now, viewers. Lalan Singh resigns as JDU chief. Nitish to take over as the next chief. Massive breakthrough after 12 years of negotiations. This government strikes big success on ULFA peace deal. Historic center ULFA peace deal to take shape today will end 4-decade-long insurgency. Probe reveals both suspects took auto from Jammu University. CCTV footage being scanned. Cracks widen in India. Lines over PM phase now. Siddharamaiah pitches for Rahul as PM phase, even as Aam Aadmi Party and TMC bat for Kharge. Stage set for the Grand Ram Mandir unveiling. PM to visit Ayodhya tomorrow to launch projects worth rupees 11,000 crores. Amid buzz over major bureaucratic reshuffle, PM to preside over chief secretaries meet in the capital. Viewers, we are live and breaking. I'm Shivangi Shukla getting you the latest. Bihar CM Nitish Kumar became the new president of the Janata Dal president. And in fact, this is happening after Rajiv Ranjan Singh, alias Lalan Singh, resigned from the post. Nitish Kumar was elected to the top party post at the JDU's two-day National Executive meeting in Delhi. Minutes before he was named the new JDU chief, Lalan Singh stepped down and proposed Kumar as president. Here are a few reactions on the developments in the Bihar cabinet. Listen in, and we also are tracking this story very closely. Let's play out the reactions first. अरे धूप चलिए आज बैठक में थी आज बैठक में अरे वहाँ चलिए ना धूप में चलिए धूप में चलिए ललन सिंह जी हम भी थे वहाँ जब उन्होंने प्रस्ताव दिया था। तो नीतीश कुमार कब कार्यभार संभालेंगे? राष्ट्रीय कुमार जी ने स्वीकार कर लिया तो ये कहा जाए कि आज से राष्ट्रीय अध्यक्ष अब नीतीश कुमार है। अभी तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, वो अगर इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर देगी तो स्वाभाविक रूप से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। विजय जी, कारण क्या रहे ललन सिंह के इस्तीफे देने? ललन बाबू ने खुद कहा, उन्होंने मीटिंग में कहा कि पहले भी वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था और अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा। इसलिए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो स्वीकार करें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। विजय जी, नाराजगी की बात थी ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों के बीच में, क्या वो एक मुख्य वजह रही ललन सिंह के इस्तीफे की? किस चीज की? ललन सिंह के इस्तीफे की मुख्य वजह क्या दोनों के बीच में जो नाराजगी है वो भी एक मुख्य वजह रही? नाराजगी? बिल्कुल। इतना नया शब्द आप कहां से ला रही है? ये इस शब्द का तो कहीं कोई जिक्र नहीं है। महेश्वर हजारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, डिप्टी स्पीकर महेश्वर जी। एक बात जो आज जो बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन हुआ है वो ये हुआ है कि ललन सिंह का इस्तीफा और साथ ही साथ नीतीश कुमार का नाम जो प्रपोज किया ललन सिंह ने, तो आप लोग बताइए कि पहले से ही ये तय था कि ललन सिंह अपना इस्तीफा सौंपने वाले हैं? नहीं, पहले से तय नहीं था, चूँकि आदरणीय नेता ललन बाबू ने उन्होंने जाहिर की, चूँकि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे बहुत व्यस्तता है और पार्टी के संगठन पूरे देश में खड़ा करना है, उसमें मैं पूरी समय नहीं दे पाऊंगा। इसलिए सम्मानित नेता नीतीश कुमार जी से आग्रह किए, जो आप स्वयं इसको संभालने का काम कीजिए, और कर्तव्य ध्वनि से सभी ने स्वागत किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उसे स्वीकार भी करने का किया। अभी नेशनल काउंसिल की बैठक हुई, उसमें मुहर लग जाएगी। एक और बात महेश्वर जी, एक बात लगातार कही जा रही है कि अब बीजेपी भी ये बात खुल करके कह रही है कि जो नज़दीकियां थी ललन सिंह की आरजेडी से, वो एक मुख्य कारण रहा, क्योंकि नीतीश कुमार नाराज थे इस बात से, उनकी बढ़ती नज़दीकियां आरजेडी से, और वो एक मुख्य कारण था जिसकी वजह से ललन सिंह के इस्तीफे की भी चर्चा सुखबुगाहट पटना से लेकर दिल्ली तक काफ़ी दिनों से थी। नहीं, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है, कहीं कोई हमारा शीर्ष नेतृत्व न बोला है, न हम लोगों को कोई भी MP MLA बोला है। यह सिर्फ मीडिया की उपज थी, हम लोगों कहीं कोई नहीं थी। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और ललन बाबू में दोनों में इतनी मित्रता है, और जो पार्टी का फाउंडर मेंबर है दोनों आदमी,
पार्टी के बनाने में, पार्टी के बढ़ाने में आदरणीय ललन बाबू की बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा रही है, इसलिए ललन बाबू पर कोई शंका नहीं कर सकता है। आज से ही नीतीश कुमार अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। नेशनल काउंसिल की बैठक होगी, उसमें मुहर लग जाएगी, उसके बाद संभालेंगे। एक और बात, नाराजगी की वजह क्या ये भी थी क्योंकि ललन सिंह को एक मुख्य भूमिका दी गई थी ये कन्वे करने के लिए कि नीतीश कुमार की मंशा है कि वो पीएम चेहरा हो, वो नेशनल कन्वीनर हो अपोजिशन ब्लॉक का, लेकिन ललन सिंह शुरू से कन्वे नहीं कर पाए, ये भी एक वजह बताई जा रही थी। सब कुछ नहीं, ललन बाबू ने ईमानदारी से पार्टी के संगठन बढ़ाने का काम किया, पार्टी की मेहनत करने का काम किया, और चूंकि यह तो प्रक्रिया होती है, हर एक प्रत्येक वर्ष बैठक का 2 वर्ष हो चुका था, इसलिए आदरणीय ललन बाबू ने आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को कहा कि आप संभालने का काम कीजिए, क्योंकि मैं चुनाव में व्यस्त रहूंगा। तो जेडीयू के लीडर्स खुश हैं नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से, क्योंकि 2020 के बाद अब वो कमान संभालेंगे तो उनकी नेशनल एम्बिशन क्या अब खत्म हो जाएगी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए जाएंगे? वो सारे के सारे लोग खुश हैं, जितने भी हमारे नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं, नेशनल राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सारे लोग खुश हैं। देवेश जी, एक सवाल बस लेना चाहूंगी, आज जो फैसला हुआ, ललन सिंह ने अपना इस्तीफा सौंपा और नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रपोजल दिया, क्या इसकी सुगबुगाहट, इसकी चर्चा क्या कल ही हो चुकी थी, तमाम चीजें पहले ही तय थी? अगर आपको नहीं मालूम था कल कि कल क्या क्या हुआ था, तो हम लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा? लेकिन हाउ विल वी कम टू नो? वी हैव कम दिस मॉर्निंग, यू आर हियर इन दिल्ली सिंस लॉन्ग, सो यू मस्ट बी हैविंग मोर इन्फॉर्मेशन as to what was to happen. But there was already reports of Lalan Singh quitting from his designation as national president, and it was already iterated also that all these things will formally be announced in the national executive meeting. Could we say that the people, the veterans inside JDU already knew about it? Well, it was in the air. Definitely, it was there in the air, and he had himself announced. Honorable Rajiv Ranjan Singh, Lalan Singh, had himself announced that he wants to contest elections. He wants to go there in the field and work in his constituency, and that's why he wants to quit the post. But no fire is without the smoke. No smoke is without the fire, Deveji. You already know, and all the ongoing rift news was also because of close proximity of Lalan Singh with RJD leaders. And it was one of the reasons because of the growing rift. No, absolutely not. That's a rumor, I would say. That's not a very proper rumor to be spread around. We are in the government with the RJD. Where's the question of proximity? JDU is in the government with the RJD. So where's the question of proximity? The whole the complete JDU is in close proximity with the RJD as long as the government is there. It will always be there. Continuously is iterating that Lalan Singh is the man because of whom the alliance between BJP and JDU couldn't work, and the alliance between RJD and JDU was because of Lalan Singh only. All rumors spread by you people. Nitish Kumar, when he will formally take up the charge? Well, he has already accepted it. He's already become the president. Well, yes, I'm joined by Lalan Saraf, who is an MLC in the Bihar Vidhan Parishad and a very, very close confidant of Nitish Kumar. Nitish Kumar trusts him a lot. In fact, he is the eyes and ears of Nitish Kumar. Lalan Saraf जी, आप मीटिंग में मौजूद थे, क्या क्या बातें हुई? हम लोग तो पहले से बता ही रहे थे कि ललन जी जा रहे हैं, नीतीश जी आ रहे हैं। देखिए, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इच्छा व्यक्त की गई है, उसकी संपुष्टि नेशनल काउंसिल की बैठक में होनी है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि इस पद से मैं मुक्त होना चाहता हूं और आप इस पद को संभालिए। तो मेरा ये मानना है कि 2024 के चुनाव को देखते हुए और इंडिया गठबंधन का जो धुरी बन के उभरे हैं नीतीश कुमार जी, ये बहुत ही आवश्यक था और ये ससमय सही फैसला है। इससे इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। नीतीश जी ने एक्सेप्ट कर लिया प्रेसिडेंटशिप का पोस्ट और क्या कहा? नीतीश कुमार जी का कहना था कि बहुत ही मुझ पर प्रेशर पड़ा और चूंकि इन्हें चुनाव भी लड़ना है तो मैंने स्वीकार कर लिया है, मैंने अपनी सहमति दे दी है और यदि राष्ट्रीय परिषद की संपुष्टि हो गई तो मैं इस पद को संभालूंगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मैं लोगों को कार्यभार दूंगा, अलग अलग कार्यभार दूंगा और सबको काम करना पड़ेगा और सबने काम करने की सहमति दी है। और क्या वर्किंग प्रेसिडेंट ये सब भी बनाए जाएंगे डिसेंट्रलाइज? ऐसी कोई नहीं है, काम वो बांटेंगे, लोगों को अलग अलग काम देंगे।
और सबसे बड़ी बात कि ललन सराफ जी, ललन सिंह का 2 महीने पहले चुनाव के हटना ये अनायास नहीं है। ये एक तरीके से देखा जाए तो राजनीति में गलियारे में बात चल रही थी कि लालू जी से क्लोज हो गए, पार्टी के विधायक टूट रहे हैं, जैसे आरसीपी सिंह पर आरोप लगा था। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में नया पॉलिटिकल रिअलाइनमेंट हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी बातें आई है, आप जानते हैं कि भाजपा जो मिथ्या और भ्रामक दुष्प्रचार करती है, मुझे उसी का ये नतीजा लगता है। ललन सिंह जी का अपना चुनाव है और उसके साथ ही साथ बहुत सारे काम करने पड़ते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को। हमारे 25 प्रदेश में संगठन है, 25 प्रदेशों में जाना और हर जगह चुनाव का काम करना और खुद चुनाव लड़ना, यही कारण होगा कि उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर करके और नीतीश कुमार जी को। विधायक आपके एकजुट रहेंगे हर हालत में नीतीश कुमार जी के साथ, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सबके सब विधायक एकजुट हैं और विपक्ष के विधायक भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी का नेतृत्व बना रहे। 2017 में भी आप लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कि भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे और अचानक खिड़की दरवाजा खुल गया और डिनर आयोजन हो गया। बीजेपी के बड़े नेताओं को हवा भी नहीं थी बिहार में, ऊपर से आदेश आया, सारे विधायक सीएम हाउस में घुस गए। तो क्या उसी तरह की पटकथा फिर से लिखी जा रही है क्या? 2020 से जो भाजपा ने हमारे नेता के साथ किया है, तो अब इसकी कोई संभावना नहीं, दूर दूर तक कोई संभावना। 2020 से कई मॉडल, आप भी जानते हैं, कई मॉडल छुटभइयों से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना कि क्षेत्रीय दल खत्म कर दिए जाएंगे। तो इस तरह की जितनी बातें भाजपा ने की है, हमारे विधायकों को मणिपुर में तोड़ना, नॉर्थ ईस्ट में, जब क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी बन जाती, ऐसी बातें वो की है जो भाजपा जैसे नेशनल पार्टी को शोभा नहीं देता है और सही नहीं है। भाजपा से मोह भंग हो गया। भाजपा मुक्त भारत चाहिए। लेकिन आपके जेडीयू का तो एक मजबूत धड़ा चाहता है कि भाजपा के साथ फिर से मिल जाए, लालू जी के साथ नहीं रहना चाहते। ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती है। ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर के कल आपने एक बात कही थी कि ऑफिस बियरर्स की कैपेसिटी में नहीं है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो होगा वो देखा जाएगा। आज इस्तीफा हो गया है, तो ये माना जाए कि तमाम चीजें पहले से तय थी। जो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जो कुछ भी होगा वो राष्ट्रीय परिषद के बाद आपको बताया जाएगा। लेकिन जो प्रपोजल रखा ललन सिंह ने, नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का जो प्रपोजल दिया, कहा जा रहा है नीतीश कुमार ने उसको स्वीकार भी कर लिया। सब परिषद में होगा, अभी नहीं कुछ भी। तो ये नेशनल काउंसिल की बैठक में ये माना जाए कि जो फॉर्मल अनाउंसमेंट है फाक जी, वो फॉर्मल अनाउंसमेंट हो, ऐसे फैसले होंगे वो राष्ट्रीय परिषद की बैठक में होंगे। तो बतौर जेडीयू नेता आप खुश हैं कि नहीं कि नीतीश कुमार दोबारा अपना कार्यभार संभालेंगे? कभी नाराज ही नहीं थे, खुश होने की क्या बात। लेकिन ललन सिंह जी से तो काफी सारे लोग नाराज थे, काफी सारे जेडीयू नेता नाराज नहीं था, ये आप कह रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब लोग खुश थे और सब खुश हैं और आगे भी खुश रहेंगे। भी कह रही थी कुछ भी ठीक नहीं है गठबंधन। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उससे हमको कोई बहस नहीं। हमारे पार्टी में कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, दल का कोई आदमी, सब लोग खुश थे, सब एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे, कहीं कोई बात नहीं है। माना जाए कि आज से नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? नहीं, ये बिल्कुल नहीं माना जाए। राष्ट्रीय परिषद के बाद इसको तय किया जाएगा। कह रहे हैं ललन सिंह जी कि हम इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं कि चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ना है तो व्यस्तता ज़्यादा होगी, इस कारण से। देखिए, कई पार्टी और होगी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और चुनाव भी लड़ते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते और तब चुनाव लड़ते तो कोई विदेश में थोड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाकर काम करना पड़ता है कि अपने क्षेत्र में समय नहीं दे पाते। यह तो बिल्कुल फालतू की बातें हैं ना। जो अंदर की बात है, जो बाहर भी उस तरह की चर्चा आ रही थी, इनका आरजेडी के साथ अधिक नज़दीक का रिश्ता होना, इससे जेडीयू को खतरा महसूस हो रहा था, इस कारण से ऐसा हुआ है। यूनाइटेड का अपना मामला है, वहां की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। हम आज भी तैयार हैं कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर चुनाव लड़े, दोनों को हराने का काम है। जेडीयू में जो खुल के सामने आ गया है सर। देखिए, नेता तो सिर्फ एक ही है, नीतीश कुमार, वहां दूसरे और तो है नहीं। तो नीतीश कुमार जी कभी आरसीपी जी को अध्यक्ष बनाए, कभी ललन जी को अध्यक्ष बनाए, कभी और किसी को अध्यक्ष बनाएंगे, उनका दायित्व है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हम पूरे महागठबंधन और इंडी गठबंधन के लोगों को हराने के लिए तैयार हैं।
Indian Navy proudly unveils a new design of admirals, and they are showcasing the nation's maritime legacy. Now, this unveiling is symbolizing the Indian Navy's pride in its heritage and innovation. Millions of visitors are anticipating to visit Ayodhya after its inauguration. On transport facilities for the visitors, Uttar Pradesh Transport Minister said that department will construct a bus depot to provide airport-like facilities with VIP lounges in Ayodhya. Ahead of the Ayodhya Airport inauguration, the Union Minister for Civil Aviation, Yogi Adityanath Ayodhya, said that the Ayodhya Airport aims to facilitate convenient visits for a significant number of tourists to the Ayodhya Ram Temple. Several parts of Delhi NCR enveloped in dense fog today morning. The IMD has issued red alert and urged people not to venture out their vehicles between 4 a.m. and 10 a.m. because of the reduced visibility across the state. External Affairs Minister S. Jaishankar said that the bond between India and Russia holds a deeper significance. He said that India and Russia are always trying to find new linkages, common points, and the intellectual world can make a difference. The Gujarat BJP meet is underway in Gandhinagar ahead of the 2024 Lok Sabha polls. Gujarat CM Bhupendra Patel chairs the executive meet with other top leaders to discuss the poll strategy. Drone dropping has emerged. One of the major concerns for the BSF since 2020, and special equipment have been installed for thwarting the drone threats. A 360-degree vigil is being kept by BSF troops equipped with light machine guns. And this is happening as Gursimran gets this report from Jammu's Akhnur sector. The threat that emerged in 2020 is now turning to be one of the most challenging threats along the international border. The drone threat by the Pakistani side. It was in 2020 when it came into being, when a drone was brought down by the BSF in the Kathua area of Jammu. And since then, the drone has become a menace. If we speak of the present year, in Jammu region and in Punjab, there have been more than 120 drones that have been brought down by the border security forces, which shows the intensity with which Pakistan is smuggling arms and ammunition as well as narcotics into the Indian territory. And to thwart the attempt of Pakistan, these troops of the BSF, they have developed a localized system to thwart the attempt of the drone. Based on this poll, this is the LMG that can give the enemy's drone a shot at. And also equipped with the Breta and INSAS, these troops of the BSF have been deployed on almost every post of the border security force. Temple Town Ayodhya is being decked up with flowers, lights and sculptures to give it a divine look ahead of the Prime Minister Modi's visit that is scheduled to take place tomorrow, December 30th, to inaugurate an international airport and the redeveloped Ayodhya railway station. Here's more. 4 hours to go for the Prime Minister to arrive in Ayodhya, where he will be inaugurating thousands of crores worth of project and dedicating them to the nation. But this, of course, also requires a lot of security arrangement, and you can see how right behind me there have been several police officers that have been deployed, and in fact this is across the city of Ayodhya that this kind of a bandobast is in place, especially keeping in mind that the Yogi Adityanath, the Chief Minister for Uttar Pradesh, is going to be arriving here, taking a stock of the entire situation, carrying out review meetings as well, right before the Prime Minister's arrival in Ayodhya as well. In fact, police officers from across the state have been deployed in the city of Ayodhya. We also see RPF as well that has been deployed along the route in this particular national highway on the entrance of Ayodhya as well.
And that essentially helps us understand the kind of security that is in place, because it is not just one rally. There is going to be a huge road show that the Prime Minister is going to be also carrying out. Keeping that in mind, the security is in place. In fact, this is the entire Dharm Path that we also get to see, where in fact the police has been deployed. The police has been kept and making sure that each and every vehicle that is passing by from that particular place and that particular point is also being checked. And that's how the security is in place, just less than 24 hours for the Prime Minister to arrive in Ayodhya. With video journalist Vipin Mori, I'm Priyanka Sharma for Republic. Special rituals will be performed from 14 to 22nd January. The festivities will include the Amrit Mahotsav and a 1008 Hundi Mahayagya, culminating in the consecration ceremony on Jan 22nd. A procession featuring 100 idols of Lord Ram is set to take place on Jan 17, adding to the spiritual fervor. Take a look at this report. मेरी झोपड़ी के भागा जाग जाएंगे, राम आएंगे, दीप जला के दिवाली मनाएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। Elaborate arrangements have been made for Amrit Mahotsav. तो आपको बता दें कि इंतजार 22 तारीख का है जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन आपको बताएं उससे पहले किस तरीके की तैयारियां अयोध्या नगरी में देखने को मिल रही हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त एक ऐसी जगह पर है जहां पर 14 तारीख से उत्सव की शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें कि अमृत उत्सव यहां मनाया जाएगा, जो कि राम भद्राचार्य जी के द्वारा यहां आपको बता दें कि वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में अनुष्ठान किए जाएंगे और इसी के साथ में कई ऐसे कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए हैं। The ritual will be conducted by Jagat Guru Ram Bhadracharya. क्या तैयारी है यहाँ पर, किस तरीके से कितनी यज्ञशालाएं बनाई गई हैं, कैसे कैसे ये अनुष्ठान होगा? ये तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाए जा रहे हैं। अष्टोत्तर सहस्र यानी 1008 कुंडीय श्री हनुमान महायज्ञ होगा और 14 जनवरी को महाराज श्री जगत गुरु जी का जन्म दिवस है। उस दिन से यह कार्यक्रम शुरू होगा 14 जनवरी से 22 जनवरी पर्यंत। और इस यज्ञ के आचार्य हमारे गुरुदेव राजस्थान से डॉक्टर बालकृष्ण जी कौशिक होंगे और यज्ञशाला की अभी तैयारियां चल रही है। कुंड निर्माण हो चुके हैं, लेकिन जो शेष तैयारी है वो पूर्ण हो रही है, अभी जारी है। और ये अनुष्ठान जो है इसमें 1008 जोड़े भी बैठेंगे? बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी कि 14 तारीख से शुरू होकर प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन ही इसका समापन होगा। 22 जनवरी को ही इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। आपको ये तस्वीर देखने को मिल जाएगी कि अभी जो यज्ञशालाएं हैं उनका निर्माण किया जा रहा है। इसी यज्ञशाला में हवन होते हुए यहाँ पर नजर आएगा और जिसमें 1008 जोड़े यहाँ पर बैठेंगे और 1008 ही जो यज्ञशालाएं हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं। तो आप देखिए कि प्रभु राम के आगमन को लेकर, मंदिर निर्माण को लेकर किस तरीके का उत्सव आपको अयोध्या नगरी में देखने को मिलेगा। जगह जगह इसी तरीके के कार्यक्रम यहाँ पर होंगे और राम भद्राचार्य जी का जन्म दिवस है 14 तारीख को और उसी शुभ दिन से शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी अमृत उत्सव की, जो कि मनाया जाएगा, जिसमें बड़े गणमान्य लोग भी यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं जो पहुंचेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए जो 14 तारीख से लेकर और 22 तारीख तक एक बड़ा उत्सव आपको अयोध्या नगरी में देखने को मिलेगा। साथ में आपको ये भी बता दें कि लगभग 1008 हवन कुंड बनाए गए हैं जिसमें सीधे तौर पर अनुष्ठान को संपूर्ण किया जाएगा। वो कुंड भी हम आपको दिखाएंगे, लेकर चलेंगे और यहाँ पर तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो भी होने वाले हैं। पीछे भी एक बार संतोष आपको तस्वीरें दिखाएंगे। मंच अभी तैयार हो रहा है, सजाया जा रहा है और अभी तैयारी यहाँ लगातार जारी है। From special rituals to cultural programs such as Ram Katha will be conducted in the build-up to the Pran Pratishtha. Bureau Report, Republic TV. Massive breakthrough after 12 years of negotiation as government strikes big success on ULFA peace deal. Historic center ULFA peace deal to take shape today will end 4-decade-long insurgency. Amid buzz over major bureaucratic reshuffle, PM to preside over chief secretaries meet in the capital.
Narasimha Rao, when he was Prime Minister, kept referring to the disputed structure as a mosque. So was that also an attempt to instigate? See, it was always referred to as the disputed structure. It was never referred to as mosque. Till Narasimha Rao said there is a mosque. And then this whole clash of temple versus mosque was built. Muslims versus Hindu was built. Secularism versus nationalism was built. QS&THE, the world's foremost university rankings organizations, have ranked Amity amongst the top 3% universities globally, making it among the very few Indian universities to be included in both rankings. Yet another top ranking for Amity University. हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। टाइल्स जो भी हो, लगाने के लिए MYK लेटिक्रीट टाइल एडेसिव। MYK लेटिक्रीट टाइल एडेसिव, फॉर्मूला ऐसा कि टाइल न टूटेगा न छूटेगा। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। पुलाची जाना था, बस छूट गई। अगली बस कब है? गुरुजी, सालों के बाद देख रहा हूँ तुमको। गुरुजी ने मुझे क्लीनर से ड्राइवर बनाया। आप पोलाची जा रहे हो ना? हाँ, चलिए आपको ट्रक से छोड़ देंगे। अब ट्रक में सफर करना मुश्किल है। हमारा नया टाटा सिग्ना घर जैसा आरामदायक है। पोलाची में कोई खास काम? मैं नाना बन गया हूँ। बधाई हो। नातिन के लिए सोने के कड़े ले जा रहा हूँ। गुरुजी खाना खा लेते हैं फिर चलेंगे। यहाँ क्या मिलेगा? अपना ढाबा यही है। गुरुजी पोलाची पहुँच गए। सफर का पता ही नहीं चला। वापसी में साथ चलेंगे? हाँ, मगर ट्रक मैं चलाऊंगा। टाटा मोटर्स ने बड़ी लगन और समझ से बनाया है एक नया सिग्ना कैबिन, जो आपके सेफ्टी, स्टोरेज और कंफर्ट की जरूरतों को पूरा करे। अब ड्राइवर प्रोडक्टिविटी होगी और भी ज्यादा। टाटा ट्रक्स, देश के ट्रक्स। Rao, when he was Prime Minister, kept referring to the disputed structure as a mosque. So was that also an attempt to instigate? See, it was always referred to as the disputed structure. It was never referred to as mosque. Till Narasimha Rao said there is a mosque. And then
this whole clash of temple versus mosque was built. Muslims versus Hindu was built. Secularism versus nationalism was built. I'm Shivangi Shukla getting you the latest. And what we see right now is happening is that we are waiting for that very important massive breakthrough which has come in. Center and the ULFA will ink a peace deal, and this is a huge breakthrough in negotiations. We'll get to you all the details of that, but first the headlines we are tracking at this moment. Massive breakthrough of a 12-year center ULFA to ink peace deal shortly. Mega reject in JDU ahead of 2024 elections. Lalan Singh steps down. Nitish sets to take over as chief. India divided over prime ministerial phase. Hurdle. Sudhar Ramaiah pitches for Rahul now. Sources suggest seat sharing discussion likely in January. BJP fires Indi Joro Yatra attack. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath Ayodhya to take stock of the preparedness. All eyes on Prime Minister's mega Ayodhya visit set to unveil mega projects ahead of the inauguration. And viewers, let's go ahead to the top story tracking right now. Nitish Kumar was unanimously re-elected as president of Bihar's ruling Janta Dal at a meeting of the party's national executive in Delhi. The Bihar chief minister was reappointed minutes after aide Lalan Singh stepped down, ending weeks of frenzied speculation. The big development comes ahead of 2024 elections, viewers. So top update coming to Republic TV, and we are getting many reactions coming in as well. Let's play them out. बात मत चले, अरे धूप चले, आज बैठक में अरे वहाँ चलिए ना, धूप में चलिए, धूप में चलिए, धूप में चलिए। हम भी थे वहाँ जब उन्होंने प्रस्ताव दिया था। तो नीतीश कुमार कब कार्यभार संभालेंगे? राष्ट्रीय कुमार जी ने स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया तो ये कहा जाए कि आज से राष्ट्रीय अध्यक्ष अब नीतीश कुमार हैं। अभी तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, वो अगर इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर देगी तो स्वाभाविक रूप से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। विजय जी, कारण क्या रहे ललन सिंह के इस्तीफे देने? ललन बाबू ने खुद कहा, उन्होंने मीटिंग में कहा कि पहले भी वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था और अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा। इसलिए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो स्वीकार करें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। विजय जी, नाराजगी की बात थी ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों के बीच में, क्या वो एक मुख्य वजह रही ललन सिंह के इस्तीफे की? किस चीज की? ललन सिंह के इस्तीफे की मुख्य वजह क्या दोनों के बीच में जो नाराजगी है वो भी एक मुख्य वजह रही? नाराजगी? बिल्कुल। इतना नया शब्द आप कहां से ला रही है? ये इस शब्द का तो कहीं कोई जिक्र नहीं है। महेश्वर हजारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, डिप्टी स्पीकर महेश्वर जी। एक बात जो आज जो बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन हुआ है वो ये हुआ है कि ललन सिंह का इस्तीफा और साथ ही साथ नीतीश कुमार का नाम जो प्रपोज किया ललन सिंह ने, तो आप लोग बताइए कि पहले से ही ये तय था कि ललन सिंह अपना इस्तीफा सौंपने वाले हैं? नहीं, पहले से तय नहीं था, चूँकि आदरणीय नेता ललन बाबू ने उन्होंने जाहिर की, चूँकि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे बहुत व्यस्तता है और पार्टी के संगठन पूरे देश में खड़ा करना है, उसमें मैं पूरी समय नहीं दे पाऊंगा। इसलिए सम्मानित नेता नीतीश कुमार जी से आग्रह किए, जो आप स्वयं इसको संभालने का काम कीजिए
और कर्तव्य ध्वनि से सभी ने स्वागत किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उसे स्वीकार भी करने का किया। अभी नेशनल काउंसिल की बैठक हुई, उसमें मुहर लग जाएगी। एक और बात महेश्वर जी, एक बात लगातार कही जा रही है कि अब बीजेपी भी ये बात खुल करके कह रही है कि जो नज़दीकियां थी लल्लन सिंह की आरजेडी से, वो एक मुख्य कारण रहा क्योंकि नीतीश कुमार नाराज थे इस बात से, उनकी बढ़ती नज़दीकियां आरजेडी से, और वो एक मुख्य कारण था जिसकी वजह से लल्लन सिंह के इस्तीफे की भी चर्चा सुखबुगाहट पटना से लेकर दिल्ली तक काफ़ी दिनों से थी। नहीं, इस तरह का कहीं कोई बात नहीं है। कहीं कोई हमारा शीर्ष नेतृत्व न बोला है, न हम लोगों को कोई भी MP MLA बोला है। यह सिर्फ मीडिया की उपज थी। हम लोगों को कहीं कोई नहीं थी। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और ललन बाबू में दोनों में इतनी मित्रता है, और जो पार्टी का फाउंडर मेंबर है दोनों आदमी, पार्टी के बनाने में, पार्टी के बढ़ाने में आदरणीय ललन बाबू की बहुत ही बढ़ चढ़ की हिस्सा रही है। इसलिए ललन बाबू पर कोई शंका नहीं कर सकता है। आज से ही नीतीश कुमार अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। नेशनल काउंसिल की बैठक हुई, उसमें मुहर लग जाएगी, उसके बाद संभालेंगे। एक और बात, नाराजगी की वजह क्या ये भी थी क्योंकि लल्लन सिंह को एक मुख्य भूमिका दी गई थी ये कन्वे करने के लिए कि नीतीश कुमार की मंशा है कि वो PM चेहरा हो, वो नेशनल कन्वीनर हो अपोजिशन ब्लॉक का, लेकिन लल्लन सिंह शुरू से कन्वे नहीं कर पाए, ये भी एक वजह बताई जा रही थी। सब कुछ नहीं। ललन बाबू ने ईमानदारी से पार्टी के संगठन बढ़ाने का काम किया, पार्टी की मेहनत करने का काम किया, और चूंकि यह तो प्रक्रिया होती है, प्रत्येक वर्ष बैठक का 2 वर्ष हो चुका था, इसलिए आदरणीय ललन बाबू ने आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को कहा कि आप संभालने का काम कीजिए, क्योंकि मैं चुनाव में व्यस्त रहूंगा। JDU के लीडर्स खुश हैं नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से, क्योंकि 2020 के बाद अब वो कमान संभालेंगे तो उनकी नेशनल एम्बिशन क्या खत्म हो जाएगी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए जाएंगे? वो सारे के सारे लोग खुश हैं, जितने भी हमारे नेशनल काउंसिल के मेंबर है, नेशनल राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सारे लोग खुश हैं। देवेश जी, एक सवाल बस लेना चाहूंगी, आज जो फैसला हुआ, लल्लन सिंह ने अपना इस्तीफा सौंपा और नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रपोजल दिया, क्या इसकी सुखबुगाहट, इसकी चर्चा क्या कल ही हो चुकी थी, तमाम चीजें पहले ही तय थी? अगर आपको नहीं मालूम था कि कल क्या क्या हुआ था, तो हम लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा? हाउ विल वी कम टू नो? वी हैव कम दिस मॉर्निंग, यू आर हियर इन दिल्ली सिंस लॉन्ग, सो यू मस्ट बी हैविंग मोर इन्फॉर्मेशन as to what was to happen. But there was already reports of Lalan Singh quitting from his designation as national president, and it was already iterated also that all these things will formally be announced in the national executive meeting. Could we say that the people, the veterans inside JDU already knew about it? Well, it was in the air. Definitely it was there in the air. And he had himself announced, Honorable Rajiv Ranjan Singh, Lalan Singh had himself announced that he wants to contest elections. He wants to go there in the field and work in his constituency. And that's why he wants to quit the post. But no fire is without the smoke. No smoke is without the fire, Deveji, you already know. And all the ongoing rift news was also because of close proximity of Lalan Singh with RJD leaders. And it was one of the reasons because of the growing rift. No, absolutely not. That's a rumor, I would say. That's not a very proper rumor to be spread around. We are in the government with the RJD. Where's the question of proximity? JDU is in the government with the RJD. So where's the question of proximity? The whole the complete JDU is in close proximity with the RJD as long as the government is there. It will always be there. Continuously is iterating that Lalan Singh is the man because of whom the alliance between BJP and JDU couldn't work, and the alliance between RJD and JDU was because of Lalan Singh only. All rumors spread by you people. Nitish Kumar, when he will formally take up the charge? Well, he has already accepted it. He's already become the president. Well, yes, I'm joined by Lalan Saraf, who's an MLC in the Bihar Vidhan Parishad and a very, very close confidant of Nitish Kumar. Nitish Kumar trusts him a lot. In fact, he is the eyes and ears of Nitish Kumar. Lalan Saraf जी, आप मीटिंग में मौजूद थे, क्या क्या बातें हुई? हम लोग तो पहले से बता ही रहे थे कि ललन जी जा रहे हैं, नीतीश जी आ रहे हैं। देखिए, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इच्छा व्यक्त की गई है, उसकी संपुष्टि नेशनल काउंसिल की बैठक में होनी है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि इस पद से मैं मुक्त होना चाहता हूं और आप इस पद को संभालिए। तो मेरा ये मानना है कि 2024 के चुनाव को देखते हुए और इंडिया गठबंधन का जो धुरी बन के उभरे हैं नीतीश कुमार जी, ये बहुत ही आवश्यक था और ये ससमय सही फैसला है। इससे इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। नीतीश जी ने एक्सेप्ट कर लिया प्रेसिडेंटशिप का पोस्ट और क्या कहा?
नीतीश कुमार जी का कहना था कि बहुत ही मुझ पर प्रेशर पड़ा और चूंकि इन्हें चुनाव भी लड़ना है तो मैंने स्वीकार कर लिया है, मैंने अपनी सहमति दे दी है और यदि राष्ट्रीय परिषद की संपुष्टि हो गई तो मैं इस पद को संभालूंगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मैं लोगों को कार्यभार दूंगा, अलग अलग कार्यभार दूंगा और सबको काम करना पड़ेगा और सबने काम करने की सहमति दी है। और क्या वर्किंग प्रेसिडेंट इस सब भी बनाए जाएंगे डिसेंट्रलाइज? ऐसी कोई नहीं है, काम वो बांटेंगे, लोगों को अलग अलग काम देंगे। अच्छा। और सबसे बड़ी बात कि ललन सराफ जी, ललन सिंह का 2 महीने पहले चुनाव के हटना ये अनायास नहीं है। ये एक तरीके से देखा जाए तो राजनीति में गलियारे में बात चल रही थी कि लालू जी से क्लोज हो गए, पार्टी के विधायक टूट रहे हैं, जैसे आरसीपी सिंह पर आरोप लगा था। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में नया पॉलिटिकल रिअलाइनमेंट हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी बातें आई है, आप जानते हैं कि भाजपा जो मिथ्या और भ्रामक दुष्प्रचार करती है, मुझे उसी का ये नतीजा लगता है। ललन सिंह जी का अपना चुनाव है और उसके साथ ही साथ बहुत सारे काम करने पड़ते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को। हमारे 25 प्रदेश में संगठन है, 25 प्रदेशों में जाना और हर जगह चुनाव का काम करना और खुद चुनाव लड़ना, यही कारण होगा कि उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर करके और नीतीश कुमार जी को। विधायक आपके एकजुट रहेंगे हर हालत में नीतीश कुमार जी के साथ, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सबके सब विधायक एकजुट हैं और विपक्ष के विधायक भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी का नेतृत्व बना रहे। 2017 में भी आप लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कि भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे और अचानक खिड़की दरवाजा खुल गया और डिनर आयोजन हो गया। बीजेपी के बड़े नेताओं को हवा भी नहीं थी बिहार में, ऊपर से आदेश आया, सारे विधायक सीएम हाउस में घुस गए। तो क्या उसी तरह की पटकथा फिर से लिखी जा रही है क्या? 2020 से जो भाजपा ने हमारे नेता के साथ किया है तो अब इसकी कोई संभावना नहीं, दूर दूर तक कोई संभावना। 2020 से कई मॉडल, आप भी जानते हैं, कई मॉडल छुटभइयों से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना कि क्षेत्रीय दल खत्म कर दिए जाएंगे। तो इस तरह की जितनी बातें भाजपा ने की है, हमारे विधायकों को मणिपुर में तोड़ना, नॉर्थ ईस्ट में, जबकि हम राष्ट्रीय पार्टी बन जाते, ऐसी बातें वो की है जो भाजपा जैसे नेशनल पार्टी को शोभा नहीं देता है और सही नहीं है। भाजपा से मोह भंग हो गया। भाजपा मुक्त भारत चाहिए। लेकिन आपके जेडीयू का तो एक मजबूत धड़ा चाहता है कि भाजपा के साथ फिर से मिल जाए, लालू जी के साथ नहीं रहना चाहते। ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती है। ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर के कल आपने एक बात कही थी कि ऑफिस बियरर्स की कैपेसिटी में नहीं है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो होगा वो देखा जाएगा। आज इस्तीफा हो गया है तो ये माना जाए कि तमाम चीजें पहले से तय थी जो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो कुछ भी होगा वो राष्ट्रीय परिषद के बाद आपको बताया जाएगा। लेकिन जो प्रपोजल रखा ललन सिंह ने, नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का जो प्रपोजल दिया, कहा जा रहा है नीतीश कुमार ने उसको स्वीकार भी कर लिया। सब परिषद में होगा, अभी नहीं कुछ भी। तो ये नेशनल काउंसिल की बैठक में ये माना जाए कि जो फॉर्मल अनाउंसमेंट है फाक जी, वो फॉर्मल अनाउंसमेंट हो, ऐसे फैसले होंगे वो राष्ट्रीय परिषद की बैठक में होंगे। तो बतौर जेडीयू नेता आप खुश हैं कि नहीं कि नीतीश कुमार दोबारा अपना कार्यभार संभालेंगे? कभी नाराज ही नहीं थे, खुश होने की क्या बात। लेकिन ललन सिंह जी से तो काफी सारे लोग नाराज थे, काफी सारे जेडीयू नेता नाराज नहीं था। ये आप कह रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब लोग खुश थे और सब खुश हैं और आगे भी खुश रहेंगे। भी कह रही थी कुछ भी ठीक नहीं है गठबंधन। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उससे हमको कोई बहस नहीं। हमारे पार्टी में कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, दल का कोई आदमी, सब लोग खुश थे, सब एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे, कहीं कोई बात नहीं है। माना जाए कि आज से नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? नहीं, ये बिल्कुल नहीं माना जाए। राष्ट्रीय परिषद के बाद इसको तय किया जाएगा। कह रहे हैं ललन सिंह जी कि हम इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं कि चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ना है तो व्यस्तता ज़्यादा होगी, इस कारण से। देखिए, कई पार्टी और होगी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और चुनाव भी लड़ते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते और तब चुनाव लड़ते तो कोई विदेश में थोड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाकर काम करना पड़ता है कि अपने क्षेत्र में समय नहीं दे पाते। यह तो बिल्कुल फालतू की बातें हैं ना। जो अंदर की बात है, जो बाहर भी उस तरह की चर्चा आ रही थी, इनका आरजेडी के साथ अधिक नज़दीक का रिश्ता होना, इससे जेडीयू को खतरा महसूस हो रहा था, इस कारण से ऐसा हुआ है। यूनाइटेड का अपना मामला है, वहां की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। हम आज भी तैयार हैं कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर चुनाव लड़े, दोनों को हराने का काम है। जेडीयू में जो खुल के सामने आ गया है सर,
देखिए, नेता तो सिर्फ एक ही है, नीतीश कुमार, वहाँ दूसरे और तो है नहीं। तो नीतीश कुमार जी कभी आरसीपी जी को अध्यक्ष बनाए, कभी ललन जी को अध्यक्ष बनाए, कभी और किसी को अध्यक्ष बनाएंगे, ये उनका दायित्व है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हम पूरे महागठबंधन और इंडी गठबंधन के लोगों को हराने के लिए तैयार हैं। The Prime Minister is set to inaugurate multiple development initiatives valued at over 15,000 crore rupees in Ayodhya, the range of projects aimed at boosting Ayodhya's development and infrastructure. Prime Minister Modi is scheduled to conduct a roadshow in Ayodhya tomorrow. After inaugurating the Ayodhya airport, PM Modi will be holding a 15-kilometer long mega roadshow. Prime Minister Modi will be unveiling the newly built Ayodhya airport tomorrow ahead of its inauguration. Paintings depicting Lord Ram and Goddess Sita have been painted on the highway wall near Ayodhya airport. Ayodhya Dham Junction is being illuminated in preparation for PM Modi's visit tomorrow. PM Modi will inaugurate Ayodhya Dham Junction and flag off new Amrit Bharat trains and 6 new Vande Bharat trains. Ahead of the consecration ceremony of Ayodhya Ram Temple, 2,100 women performed the puja, a ritual believed to bring auspiciousness before commencing any significant endeavor. This ritual holds the significance in preparation for the upcoming event in Ayodhya. To enhance the look of the Ayodhya Ram Temple's aesthetics, the women workers are polishing the stones designated for the temple's construction, contributing to its beautification efforts. The temple town of Ayodhya is being decked up with flowers, lights and scriptures to give it a divine look ahead of Prime Minister Modi's visit that is scheduled to take place tomorrow, December 30th, to inaugurate an international airport and the redeveloped Ayodhya railway station. Here's more. It is less than 24 hours to go for the Prime Minister to arrive in Ayodhya, where he will be inaugurating thousands of crores worth of project and dedicating them to the nation. But this, of course, also requires a lot of security arrangement, and you can see how right behind me there have been several police officers that have been deployed, and in fact this is across the city of Ayodhya that this kind of a bandobast is in place, especially keeping in mind that the Yogi Adityanath, the Chief Minister for Uttar Pradesh, is going to be arriving here, taking a stock of the entire situation, carrying out review meetings as well, right before the Prime Minister's arrival in Ayodhya as well. In fact, police officers from across the state have been deployed in the city of Ayodhya. We also see RPF as well that has been deployed along the route in this particular national highway on the entrance of Ayodhya as well. And that essentially helps us understand the kind of security that is in place, because it is not just one rally. There is going to be a huge road show that the Prime Minister is going to be also carrying out. Keeping that in mind, the security is in place. In fact, this is the entire Dharm Path that we also get to see, where in fact the police has been deployed. The police has been kept and making sure that each and every vehicle that is passing by from that particular place and that particular point is also being checked. And that's how the security is in place, just less than 24 hours for the Prime Minister to arrive in Ayodhya. With video journalist Vipin Mori, I'm Priyanka Sharma for Republic. Special rituals will be performed from 14 to 22nd January. The festivities will include the Amrit Mahotsav and also a Mahayagya, culminating in the consecration ceremony on Jan 22nd. A procession featuring 100 idols of Lord Ram is set to take place on Jan 17th, adding to the spiritual fervor. Take a look at this report.
मेरी झोपड़ी के भागा जाग जाएंगे, राम आएंगे, दीप जला के दिवाली मनाएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। Elaborate arrangements have been made for Amrit Mahotsav. तो आपको बता दें कि इंतजार 22 तारीख का है जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन आपको बताएं उससे पहले किस तरीके की तैयारियां अयोध्या नगरी में देखने को मिल रही हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त एक ऐसी जगह पर है जहां पर 14 तारीख से उत्सव की शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें कि अमृत उत्सव यहां मनाया जाएगा, जो कि राम भद्राचार्य जी के द्वारा यहां आपको बता दें कि वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में अनुष्ठान किए जाएंगे और इसी के साथ में कई ऐसे कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए गए हैं। The ritual will be conducted by Jagat Guru Ram Bhadracharya. क्या तैयारी है यहाँ पर, किस तरीके से कितनी यज्ञशालाएं बनाई गई हैं, कैसे कैसे ये अनुष्ठान होगा? ये तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अष्टोत्तर सहस्र यानी 1008 कुंडीय श्री हनुमान महायज्ञ होगा और 14 जनवरी को महाराज श्री जगत गुरु जी का जन्म दिवस है। उस दिन से यह कार्यक्रम शुरू होगा 14 जनवरी से 22 जनवरी पर्यंत है। और इस यज्ञ के आचार्य हमारे गुरुदेव राजस्थान से डॉक्टर बालकृष्ण जी कौशिक होंगे और यज्ञशाला की अभी तैयारियां चल रही है। कुंड निर्माण हो चुके हैं, लेकिन जो शेष तैयारी है वो पूर्ण हो रही है, अभी जारी है। और ये अनुष्ठान जो है इसमें 1008 जोड़े भी बैठेंगे? बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी कि 14 तारीख से शुरू होकर प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन ही इसका समापन है। 22 जनवरी को ही इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। आपको ये तस्वीर देखने को मिल जाएगी कि अभी जो यज्ञशालाएं हैं उनका निर्माण किया जा रहा है। इसी यज्ञशाला में हवन होते हुए यहाँ पर नजर आएगा और जिसमें 1008 जोड़े यहाँ पर बैठेंगे और 1008 ही जो यज्ञशालाएं हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं। तो आप देखिए कि प्रभु राम के आगमन को लेकर, मंदिर निर्माण को लेकर किस तरीके का उत्सव आपको अयोध्या नगरी में देखने को मिलेगा। जगह जगह इसी तरीके के कार्यक्रम यहाँ पर होंगे और राम भद्राचार्य जी का जन्म दिवस है 14 तारीख को और उसी शुभ दिन से शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी अमृत उत्सव की, जो कि मनाया जाएगा, जिसमें बड़े गणमान्य लोग भी यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं जो पहुंचेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए जो 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक एक बड़ा उत्सव आपको अयोध्या नगरी में देखने को मिलेगा। साथ में आपको ये भी बता दें कि लगभग 1008 हवन कुंड बनाए गए हैं जिसमें सीधे तौर पर अनुष्ठान को संपूर्ण किया जाएगा। वो कुंड भी हम आपको दिखाएंगे, लेकर चलेंगे और यहाँ पर तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो भी होने वाले हैं। पीछे भी एक बार संतोष आपको तस्वीरें दिखाएंगे। मंच अभी तैयार हो रहा है, सजाया जा रहा है और अभी तैयारी यहाँ लगातार जारी है। From special rituals to cultural programs such as Ram Katha will be conducted in the build-up to the Pran Pratishtha. Bureau Report, Republic TV. And viewers, we see that red alert has been issued. A dense fog is in Delhi, Punjab, Haryana and Chandigarh. Now, a thick layer of fog has engulfed the national capital, leading to reduction in the visibility. Akil gets the bird's eye view of thick fog that's enveloped the entire Delhi NCR region. Right now, I'm just standing at the center of Yamuna Bridge, and here you see the visual of dense fog behind me and towards my right and towards my left. There you see a dense fog has engulfed this Yamuna Bridge at the JDU flyover. And if you see, a red alert has been issued for dense fog in Delhi, Punjab, Haryana and Chandigarh. So a thick blanket of fog in the national capital has led to over 100 of flights being delayed due to which, and dense fog in the Delhi and the neighboring region, that is the Delhi NCR region. If you talk about Gurgaon, if you talk about Noida, if you talk about Greater Noida, if you talk about Faridabad, so in the entire region, the dense fog, the thick layer of dense fog has covered everything right now. And what we know so far, that Delhi is expected to see this dense fog on Friday, that is today and tomorrow itself, and with the minimum temperature to hover around 7 to 8 degrees Celsius. This is what we have been told by the IMD. And what we know so far, that schools in Noida and Greater Noida will remain shut due to the dense fog. And there have been reports that several
flights have been delayed due to the dense fog. Not only the flights, the air traffic has been affected. Apart from air traffic, if you talk about the vehicular traffic, I would like to request my VJ to show you this side visual. Here you see the visibility is pretty less, and due to which the cars moving on this road is not moving very fast. And right now, apart from this, if you talk about the train movement, so train movements is also got delayed, and several trains have been cancelled. Apart from that, what we know so far, that some trains are running very late for almost 6 to 8 hours. With video journalist Rawat Akil for Republic TV. Much more coming up. Indy divided over prime ministerial face hurdles. So the Ramaiya pitches for Rahul now. Sources suggest a seat-sharing discussion likely in January. BJP fires Indy Joro Yatra attacks. Stay tuned. अक्सर मन में डर सा आता है। तुम बस एक हाथ बढ़ाओ, राह हम बना लेंगे। तुम बस मैदान तक जाओ, हम जीत को अपना लेंगे। लेट्स प्लेज टू हेल्प मेक इंडिया समर्थ बढ़ंडे, मंजिल उनकी, साथ हमारा। hungry.co.in पर लॉग इन करें। हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे। भविष्य का भारत आप ही के हाथों में है। अब भी मौका है देश के निर्माण में एकजुट होने का। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी, तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2023-24 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। इस पल को मुमकिन करने के लिए रिया ने पहले से ही शुरुआत कर दी थी। ये पल सच हुआ, ये पल
सपनों के ख्वाबों से सजा है ये पल मानो रुक और म्यूचुअल फंड से शुरुआत करना जिम्मेदारी की निशानी है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। Massive breakthrough after 12 years. Centre and ULFA to ink a peace deal very shortly. Mega rejig in JDU ahead of the 2024 elections. Lalan Singh steps down. Nitish Kumar takes over as the chief. India divided over prime ministerial face hurdle. Siddaramaiah pitches for Rahul now. Sources suggest seat-sharing discussion likely in January. BJP fires Indi Jodo Yatra attack. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath in Ayodhya to take stock of preparedness. All eyes on Prime Minister's mega Ayodhya visit, set to unveil a mega project ahead of inauguration. A tripartite peace accord between the pro-talks faction of the ULFA, that is the United Liberation Front of Assam, and the central and Assam governments will be signed today, aiming to end decades-old insurgency in the state. Union Home Minister Amit Shah, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, and more than a dozen top leaders of the pro-talks faction of the ULFA will be present during the signing of this peace agreement. So it's a big breakthrough after 12 years, viewers. We are talking about Centre and the ULFA peace deal here. And as just a few days ago, Republic TV got you this story first, that Centre and the ULFA peace deal will be signed on the 29th of December. That is what we're expecting today. And my colleague Anirudh is joining us live on the broadcast for more on this. A tripartite peace accord is what we expect, and this is going to be historic. Aniruddha, tell us more details about this and the importance of it. Yes, Raksita, definitely this is going to be a tripartite memorandum of settlement between the United Liberation Front of Assam, the government of India, as well as the government of Assam, and this will bring to an end of 43 years of violence in the state. That is at least what is being hoped now. And with this signing of accord, there will be a tremendous shift as far as the political discourse of the state is also concerned, looking into the fact that this faction, the pro-talk faction, have the largest number of ULFA cadres intact with them. It is very, very important. The might and power of this faction cannot be underestimated. And as far as the signing of accord today is concerned, we have got to know that all the top leadership of the ULFA is already in Delhi. In a short while from now, they will be arriving at the Ministry of Home Affairs, where they will be signing the agreement, the memorandum of settlement with the government. As far as the content of this
agreement is concerned, it has been kept top secret. No one from the ULFA or from the government has opened up on what is there in this accord. But yes, sources who are privy to the points in the Charter of Demand and who are privy to what has been eventually made into the agreement have informed us that many contentious issues concerning the state of Assam, like the citizenship issues, like the NSC issue, have been kept out of this agreement for now. And there are, but let us not forget that a mega financial project will be announced through this memorandum of settlement today. And also it is going to bring in a new era of development, not only for the Assam but for the entire northeastern state, because Assam happens to be the gateway for the northeast. And we have also got to know that as far as the rights of the local indigenous people is concerned, it has been the priority of the Protok faction, and this agenda has also made it through the government of Assam, the government of India and the ULFA had been able to crack through this. And there will be a major deliberation on the number 2 agenda of the Charter of Demand, which was put in by the ULFA, that is the status of the missing ULFA leaders and cadres. And we, if sources are to be believed, then a commission is likely to be set up so that the status of the missing ULFA cadres and leaders can be investigated. Apart from this, there were several demands. Each and every demand were given a peaceful hearing by both the parties involved in this talks. And after going through a process which lasted for more than 13 years, today we have arrived at this historic movement. In a short while from now, that is at around 5 o'clock in Delhi, at around 5 o'clock today, the memorandum of settlement between the ULFA and the government of Assam and the government of India will be signed in New Delhi. Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma has also arrived in Delhi today, in fact, to be present during this historic movement. Overall, it brings a message of peace to the violent seat, the northeastern, and also it will pave way for many other organizations who are still engaging in talks or who are still shying away from the talks with the government. It will pave way for those organizations who want to come for a settlement with the government, so that a peaceful solution can be reached not only in terms of ULFA but also in the greater context of the Northeast. Rakshita. Right, Anuruddha, of course, the fact that, this is known to be the mother of all peace deals, isn't it? And it's a really historic moment that we are going to witness just in a short while from now. But tell us, why did it take 12 years? Because this is a very big question. This is this is, as you just said, that this will not only, bring a betterment for the people of Assam, but also the entire Northeast. But why? What were the hurdles? What were the difficulties? Or what politically and on ground also? So what were the challenges that it took 12 long years for this peace deal to actually materialize? See, in the initial stage itself, when the peace process started way back in 2011, there was a historic blunder by the then central government. The UPA was in power and Home Minister was P. Chidambaram. At that moment, many in Assam, many intellectuals, many organizations from Assam, including the ULFA, the Protok faction, now had tried to convince the government of India so that it can be arrangements can be made so that Paresh Barua, who is still in an undisclosed location, can come out and join the table of talks. But the government of India at that point in time decided to proceed without bringing in Paresh Barua on the table of talks. And
later on also there were several efforts by the ULFA and others as well as the government of Assam too, in order to bring Paresh Barua also on the table of talks. And the pace of the talks, which is kicked off in 2011, and the charter of demand was placed before the center. It went in a very slow-paced manner, and only towards the end of 2015, the talks resumed once again, bringing a ray of hope to the people of Assam. And when ULFA's General Secretary Anup Sethia was extradited from Bangladesh, the Bangladesh government, when they agreed to deport Anup Sethia from Bangladesh to India, then the talks process once again resumed a pace. And after it resumed a pace, a lot of deliberations were held. In the meantime, there were several efforts from the government as well as all the ULFA leaders including General Secretary Anup Sethia, to bring Paresh Barua on the table of talks. And there were certain issues again on the charter of demands which the government of India was not ready to talk. This had put the entire peace talks into a deadlock. But however, now with the government of Assam, the ULFA, as well as the government of India also agreeing together on many terms and conditions which were given by each other on the table of talks, they have reached a conclusion, and this is a positive conclusion that for once and for all, a settlement is going to be signed in Delhi today. Rakshita. Right. All right, thank you so much, Anuruddha, for joining us with those details from Guwahati. We'll keep a tab on all those updates that are coming in, because just a short while from now, we are going to see that peace deal that is going to be signed very shortly. But we will keep you updated, viewers, on that. But right now, a look at some other stories. Indian Navy proudly unveils the new design of Admiral's epaulets, showcasing the nation's maritime legacy. This unveiling symbolizes the Indian Navy's pride in its heritage and innovation. Millions of visitors are anticipated to visit Ayodhya after its inauguration. On transport facilities for the visitors, Uttar Pradesh Transport Minister says that the department will construct a bus depot to provide airport-like facilities with VIP lounges in Ayodhya. Ahead of the Ayodhya Airport inauguration, the Union Minister for Civil Aviation, Yogi Adityanath Ayodhya, has said that the Ayodhya Airport aims to facilitate convenient visits for a significant number of tourists to the Ayodhya Ram Temple. वहाँ की लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। हम आज भी तैयार हैं कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर चुनाव लड़े, दोनों को हराने का काम है। JDU में जो खुल के सामने आ गया है। Several parts of Delhi NCR enveloped in a dense fog this morning, the IMD has issued red alert and urged people not to venture out their vehicles between 4 a.m. and 10 a.m. because of the reduced visibility across the state. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says that the bond between India and Russia holds a deeper significance. He says that India and Russia are always trying to find new linkages, common points, and the intellectual world can make a difference. Gujarat BJP meet is underway in Gandhinagar ahead of the 2024 Lok Sabha polls. Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel chairs the executive meeting with other top party leaders to discuss the poll strategy. The temple town of Ayodhya is being decked up with flowers, lights and sculptures to give it a divine look ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit that is scheduled to take place tomorrow, that is the 30th of December, to inaugurate an international airport and the redeveloped Ayodhya railway station. Here's a report on that.
24 hours to go for the Prime Minister to arrive in Ayodhya, where he will be inaugurating thousands of crores worth of project and dedicating them to the nation. But this, of course, also requires a lot of security arrangement, and you can see how right behind me there have been several police officers that have been deployed, and in fact this is across the city of Ayodhya that this kind of a bandobast is in place, especially keeping in mind that the Yogi Adityanath, the Chief Minister for Uttar Pradesh, is going to be arriving here, taking a stock of the entire situation, carrying out review meetings as well, right before the Prime Minister's arrival in Ayodhya as well. In fact, police officers from across the state have been deployed in the city of Ayodhya. We also see RPF as well that has been deployed along the route in this particular national highway on the entrance of Ayodhya as well. And that essentially helps us understand the kind of security that is in place, because it is not just one rally. There is going to be a huge road show that the Prime Minister is going to be also carrying out. Keeping that in mind, the security is in place. In fact, this is the entire Dharm Path that we also get to see, where in fact the police has been deployed. The police has been kept and making sure that each and every vehicle that is passing by from that particular place and that particular point is also being checked. And that's how the security is in place, just less than 24 hours for the Prime Minister to arrive in Ayodhya. With video journalist Vipin Mori, I'm Priyanka Sharma for Republic. We are looking at how the entire city of Ayodhya is getting decked up before the 22nd of January, and this is not just aesthetics but also with a lot of significance with which the entire decoration and the construction is being carried out. Ayodhya essentially is being also promoted as the Sun City, and that is being reflected in each and every infrastructure that we see. Right here is the Dharm Path that we are looking at, and of course there are the Surya Stambh that has already been installed, which is the glass light which has the inscriptions of Jai Shri Ram as well. But right here, over here, in fact, is a very interesting statue as well that is going to be installed in the entire entry of the Dharm Path, because this is the Surya Bhagwan, the Surya God, in fact, the sun god who is on the 7 horses, and they will of course be painting this entire murti, this entire idol, which will then later on be also installed in the very beginning of the Dharm Path, or the very entry of Ayodhya. Coming in from Ayodhya, where Chief Minister of Uttar Pradesh Yogi Adityanath is all set to review the situation and the arrangements ahead of Prime Minister's visit that is all set to take place tomorrow. Ram Mandir in its final touches given to the inauguration, the construction of the Ram Temple. And right now on your screens is Yogi Adityanath. Live visuals coming in from Ayodhya. This is a live feed that we are getting right now. Chief Minister Yogi Adityanath in Ayodhya. I am yet to understand the location, the exact location where he is, but right now we know that he is holding several meetings, back-to-back meetings, and reviewing all the aspects of arrangements that have been done for yesterday's inauguration. Remember, there's an inauguration of the Ayodhya International Airport and the Ayodhya Dham railway station. He's visiting the rally ground. All right, Yogi Adityanath is in the rally ground, and he is inspecting all the venues. And tomorrow we are going to see Prime Minister Modi's arrival in Ayodhya to inaugurate the airport in Ayodhya, and also the Ayodhya Dham railway station. Those are the visuals coming in of the Ram Mandir that is all set to be fully constructed. The final touch is being given, and we see that it is taking shape ahead of the consecration ceremony on the 22nd of January. My colleague Priyanka Sharma joins us on the phone line as she's tracking a development from Ayodhya. Priyanka, we just got the live visuals of Yogi Adityanath. He was at the rally ground. Tell us what are the plans for Yogi Adityanath today? He's been reviewing the arrangements for tomorrow.
Well, absolutely, Rakshita. A big day tomorrow that is all set to take place, and the magnitude of it is reflected in these pictures that we're putting out on our screens for our viewers to understand how the Chief Minister Yogi Adityanath is in Ayodhya today. He is going to be here through the day today and is going to be taking stock of the entire developmental projects that are set to be inaugurated tomorrow by the Prime Minister in that roadshow in the rally. Now, the Chief Minister is, of course, going to be at the Ram Janmabhoomi temple as well and look at the entire construction work. Apart from that, he is going to go to the airport and then, of course, to the railway station. He is expected to also carry out a high-level review meeting with the authorities here in Ayodhya as well, where they will be reviewing the entire security measures that are in place, because to tell our viewers to understand the magnitude of it, how there are hundreds of police officials from across the districts of Uttar Pradesh who have in fact been deployed in Ayodhya to make sure that the security arrangements are in place, because there is going to be a lot of VVIP movement tomorrow, along with the Prime Minister being here carrying out a road show. That in itself requires a lot of security measures in place that are being taken stock of by the Chief Minister Yogi Adityanath. Apart from that, we have seen how there have been several of these projects that have been extremely controversial as well as and also highlighted when it comes to Ayodhya, that being of the airport and also the railway station, also of the tent city that is going to be inaugurated. So all of these developmental push projects that are being made and are inaugurated, so that we can see how the government is pushing for Ayodhya to be made into an international religious tourist destination as well. So those points being kept in mind, we are looking at the magnitude of the entire event that is all set to take place tomorrow, when the Prime Minister is going to be in Ayodhya tomorrow morning. And that is why the Chief Minister is here today. And we had seen how the Chief Minister was expected, in fact, to be here even yesterday and carry out review meetings with the authorities here in Ayodhya, along with the trust members as well that he was all set to meet with. Because remember, in the backdrop of all of these security measures, we are also looking at developments taking place from the trust. There had been a high-level meeting of the trust as well that had taken place at Champat Rai's house, where in fact Gopal Rai along with Vipendra Mishra and other chief priests had also been present, because the main important decision of selecting the idol was supposed to be taken today. The voting is supposed to take place today, and perhaps the Chief Minister is also going to be briefed about these developments when it comes to the trust as well today itself, because he was expected to be here yesterday, and all of these discussions were also expected to take place here yesterday itself. But today, as the Chief Minister is here, he's on the ground, he's making it a point to go to all of these places personally and looking at the entire arrangements that have been made by the authorities here. He is in fact also going to be having a meeting with the SSP for the security arrangements. Then we'll also be meeting with the ADA for the entire projects that have been inaugurated. So a lot of review meetings that we can expect perhaps in an hour or two from now, post the ground level taking stock of the situation that the Chief Minister really completes. Post that, we can expect a lot of high-level review meetings that will take place. And we were also learning from our sources that the Chief Minister perhaps might also spend the night here in Ayodhya itself, because the Prime Minister is going to be arriving early in the morning tomorrow, and post which we will see back-to-back events and road shows and rallies that will take place of the Prime Minister. Expected that the Prime Minister might also visit the Ram Janmabhoomi temple as well. So a lot of movement that we can expect tomorrow of the Prime Minister, which is why the magnitude of the event in itself requires that this kind of arrangements are to the T, and that's why the Chief Minister himself here on the ground or in Ayodhya and making it a point to go to each and every point where the Prime Minister expected to visit as well, and will also be speaking to each and every official to make sure that the security is in place, the arrangements are in place, and also, as you pointed out, that we were getting those pictures of Yogi Adityanath at the rally point, making sure that the public rally also goes without a hitch as well. Absolutely. All right. Thank you so much, Priyanka, for joining us with those details. We'll keep coming back to you for more as we get more inputs from Ayodhya. But those are the live visuals coming in. Yogi Adityanath reviewing preparations and even speaking to the public there at the rally ground in Ayodhya before Prime Minister's visit. We'll try and get you more details on the other side. Time for a very, very short break, viewers. But on the other side, more details and news coming in on the other side. Stay tuned. Narasimha Rao, when he was Prime Minister, kept referring to the disputed structure as a mosque. So was that also an attempt to instigate? See, it was always referred to as the disputed structure.
it was never referred to as mosque till Narasimha Rao said there is a mosque. And then this whole clash of temple versus mosque was built. Muslims versus Hindu was built. Secularism versus nationalism was built. QSMT achieved. The world's foremost university rankings organizations have ranked Amity amongst the top 3% universities globally, making it among the very few Indian universities to be included in both rankings. Yet another top ranking for Amity University. दिल के सारे राज खोलता है जब ये डायमंड बोलता है। दिल की ऐसी बातों को डायमंड से बुलवाओ। मालाबार आओ और आप पाइए डायमंड वैल्यू पे अप टू 25% ऑफ ड्यूरिंग माइंड डायमंड फेस्टिवल। फिल्म अनुकूल नीति, सिंगल विंडो सिस्टम, ऑनलाइन शूटिंग की अनुमति और सब्सिडी की सुविधा ने उत्तर प्रदेश को बनाया है देश का मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट। 80 फिल्मों को सब्सिडी के तौर पर दिए गए हैं 44 करोड़ रुपए। विभिन्न स्थानों पर 450 से अधिक फिल्मों की हुई है शूटिंग। स्थानीय कलाकारों को मिला है अपना हुनर दिखाने का अवसर। माननीय मुख्यमंत्री जी मानते हैं कि सकारात्मक फिल्में समाज को जागरूक बनाने का आधार हैं। इसी के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस इंटरनेशनल फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही है। फिल्म स्टूडियो, होटल्स, मॉल्स, थीम पार्क, मिक्सिंग और रिकॉर्डिंग स्टूडियो जैसी सुविधाएं फिल्म उद्योग के माध्यम से आकर्षित करेंगी पूंजी निवेश। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। आंध्रा की वर्मा फैमिली को गरम भाजी पसंद है, आगरा की वर्मा फैमिली को धर्म भाजी पसंद है। फैमिलीज जितनी भी सेम लगे, होती अलग है। इसलिए नया वीमैक्स पोस्टपेड जो दे हर फैमिली को उनकी पसंद की चॉइसेस, जैसे इजी डाइनर, डिज्नी प्लस हॉटस्टार एंड मोर। वीमैक्स पोस्टपेड, चूज व्हाट यू वांट टू यूज। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत।
Massive breakthrough after 12 years. Centre and ULFA to ink a peace deal shortly. Mega reject in JDU ahead of 2024 elections. Lalan Singh steps down. Nitish Kumar takes over as the chief. Indeed, divided over prime ministerial face hurdle. Siddaramaiah pitches for Rahul Gandhi now. Sources suggest seat sharing discussion likely in January. BJP fires Indi Jodo Yatra attack. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath Ayodhya takes stock of preparedness. All eyes on Prime Minister's mega Ayodhya visit, all set to unveil mega projects ahead of the inauguration. Now, tripartite peace accord between the pro-talks faction of the United Liberation Front of Assam and the central and Assam governments will be signed today, aiming to end the decade-old insurgency in the state. And Home Minister Amit Shah, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, and more than a dozen of the top leaders of the pro-talks faction of the ULFA will be present during the signing of this peace agreement. So very shortly, we are going to expect this big breakthrough. It's happening after 12 years. It's known to be as mother of all peace accords. And these negotiations have been taking place for quite some time now under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. And it is very historic. In a bit, if we talk about what's been happening, if you talk about Assam, this is it's a big upliftment and a really good news for the people of Assam, and not just Assam but also the people of the northeast. The ULFA's pro-talks faction is in the national capital, and just a few days back we got you this story first on Republic TV that the centre and Assam are going to sign a tripartite peace accord with the group ULFA. And my colleague Aniruddha is joining us live from Guwahati for more. Now, the ULFA peace deal, Aniruddha, it encompasses a lot of things, including a financial package. There have been some 12-point demands also that have been put out by ULFA. Take us through all those details briefly so that for the benefit of our viewers, we can understand how important and what all goes into this deal. Yes, Rexita, as you have pointed out, there are financial packages to be announced. There are also several demands from the 12-point set of demands which have been met. But in order to give a perspective to our viewers, let me also take back them to the history part. It was on 7th of April 1979 that at the peak of the Assam agitation, the ULFA was born. They were not happy with the approach of the centre in dealing with the situations back here in Assam, and they waged a war on India. They led out an armed struggle seeking independence from India. The ULFA had been very much clear till the year 2011 that without the condition of sovereignty on the table of talks, they will not come and join the talks. But when the ULFA leaders who had been in the jungles of Myanmar, Bangladesh and Bhutan for several years since 1979 to at least 2006-7, when they came back to India, they realized the grounds have changed. The grounds have changed for better. The approach which had been in the 1960s, 1970s have brought in some changes in the state of Assam. And it was in 2011 that the leaders led by Chairman Arabinda Rajkua agreed to sit on talks. At that point in time, it was Arabinda Rajkua, Sasazar Chaudhary, the Foreign Secretary of ULFA, Raju Borua, the Deputy CNC of ULFA, then it was Chitraban Hazarika, the Financial Secretary, who initially started the peace process with the government of India. And with the sort of demands placed before the government in 2011, the
talks took an official turn and an agreement was signed. However, the entire process kept on hanging for a long time, and only after arrival of ULFA's General Secretary Anup Setia, a tripartite agreement, a tripartite pact was signed in order to formally engage in official talks with the government of India, the government of Assam and the ULFA. And today we are at this historic juncture where hopefully bringing an end to the 4-decade-long violence in Assam, which has also greatly affected the entire northeast region. A memorandum of settlement will be signed at 5 p.m. in the presence of Union Home Minister Amit Shah in New Delhi, as well as Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma will be also there. And it is being hoped that this will pave way for development, for peace and progress in the region of Northeast. However, there are also certain set of people, there are also a section of people who still believe that this signing of this accord will not bring in much change as it is being expected, because ULFA's commander-in-chief, who is now leading the anti-talk faction of the ULFA, that is Paresh Barua, who is in an undisclosed location, probably somewhere in the border of Myanmar or in China, in a safe place. He had been always has not yet joined the table of talks. He is still adamant. He is still adamant on what he says, that the demand of sovereignty is not being agreed upon by the government of India to engage in talks, and that is the reason why Paresh Barua is away from the talks. But if we consider the might, if we consider the the number of strength, it is the ULFA Pro-Talk faction which is today signing an agreement with the government of India, whose strength is manifold compared to that of the faction being led by Paresh Barua. Paresh Barua have been trying very hard to prove his presence in the last, in fact, 1 month also. He had targeted several low-intensity blasts in and around Assam's Upper Assam district, and this has always been there from his side to prove his presence. But if we talk about the strength, as I was referring to, Paresh Barua is now confined with a small number of people. What is the name you said? Taha. Let me clarify on that. Look, on this issue, I normally wouldn't like to comment about what election processes are in a different country. However, what I would like to say is the issue of radical elements being normalized and participate in elections is something perhaps I should comment on. We have seen some reports in this regard. It is an internal affair, so let me not comment on it. But the mainstreaming of radical terrorist outfits in Pakistan is nothing new and has been a part of the state policy for a long time. Such developments have serious implications for the security of our region. On our part, we will of course continue to monitor all developments that have an implication on our national security. Let me leave it at that. As regards the issue of Indian diplomats, you said being expelled from. Look, to be honest, I'm not aware of any such development. There were some speculative reports saying that intelligence officers are not being allowed being posted abroad. As a matter of policy, we do not comment on intelligence issues. I would caution against speculative reports, and I'm not aware of any such incidents of expulsion. You wanted to know in Hindi, आपका प्रश्न कौन पूछ रहा था? आप पूछ रहे हिंदी में? देखिए, इस मुद्दे के संबंध में जो अभी सिद्धांत ने पूछा, इस संबंध में हमने कुछ रिपोर्ट देखी है। हालांकि हम अन्य देशों के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कट्टरपंथी आतंकवादी संगठनों का ये इस तरह से मेन स्ट्रीम में आना कोई नई बात नहीं है और लंबे समय से उनकी राजनीति का हिस्सा बन चुका है। ये
इस तरह के डेवलपमेंट्स में हमारे क्षेत्र की सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। हमारी ओर से हम उन सभी डेवलपमेंट्स को मॉनिटर करना जारी रखेंगे जिनका हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी तरह से भी प्रभाव पड़ सकता है। Pranay, no, your question was slightly different. You had asked about whether a request regarding his activities. Look, as you are aware, the person in question is wanted in numerous cases in India. He is also a UN proscribed terrorist. In this regard, we have conveyed a request along with relevant supporting documents to the government of India to extradite him, government of Pakistan, to extradite him to India to face trial in a particular case. I think that is what you were referring to. So yes, we have of course been flagging the issue of activities that he's been wanted for. In this case, you specifically mentioned whether we wanted to extradite him. Yes, there has been a request sent to face trial in a particular case. This is a recent request. Well, I'm file number. just a day. Some time ago, some weeks ago, I would say. I'll have to check exactly when it was submitted. I have a date of when it was sent. I think our High Commission in Islamabad would have passed it on, but I could try to get you more information. But as I said, activities of people who are, wanted in criminal or terrorist activities here, we continue to take up these cases with partners to say, in this case, of course, this is extradition with Pakistan, where we have asked for, where we don't have a, I think, extradition agreement, but we have requested for him to be brought back to India to face trial. सॉरी, मैं भूल गया था, आपने इंग्लिश में शुरू किया था. जैसे मैंने कहा, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो व्यक्ति के बारे में आपने जिक्र किया, उन काफ़ी मामलों में इंडिया में वांटेड है. वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक लिस्ट है, उस लिस्ट के भी आतंकवादी लिस्ट में है. इस संबंध में हमने संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ पाकिस्तान सरकार को एक विशेष मामले में मुकदमे के सामना करने के लिए भारत में एक्स्ट्राडाइट करने का अनुरोध किया है. This is not really a matter for the Ministry of External Affairs. Perhaps, yes, we are aware of this. Ministry of External Affairs is briefing right now, speaking to the media. That was Arvind Bagchi, the spokesperson of the MEA, talking to the media about the Qatar sentencing. Remember, there were 8 of our the veterans who had been in fact sentenced to death in Qatar. Yesterday, it was a historic move that we saw that it was reversed. The punishment has been reduced. The death sentence was reversed. So the MEA is saying that they are monitoring all the developments very closely. Right now, they cannot give out much more details. But the latest we have is that the MEA is monitoring all the activities and all the developments that are happening with regards to this case, because this is a case that New Delhi has been fighting for justice for our 8 veterans in Qatar who had been in custody, who had been behind the bars for around a year, more than a year. So now in Qatar, the death sentence has been quashed, but of course the legal battle still remains. So the MEA continues to monitor the situation and monitor what is happening and provide all the legal aid to those army or navy veterans there, who had been commuted by the Qatar court. The death sentence was commuted by the Qatar court. Of course, that is a high court. The matter could go to Supreme Court. So a lot of legalities still remain, and the MEA is monitoring all of the activities there. In other news, latest update in Israel Embassy blast case in Delhi. 2 suspects have been identified by Delhi police. It is known that both suspects had taken an auto rickshaw from Jammu to Prithviraj Road. Police is investigating the CCTV footage of the entire route. BJP has once again lashed out at the Congress for seeking crowdfunding. BJP lashed out at the Congress, saying that after looting from the country, the Congress is now asking the country for donations.
Cracks continue to widen within the opposition bloc. Karnataka Chief Minister and Congress leader Siddaramaiah has pitched Rahul Gandhi now as the Prime Ministerial candidate on behalf of the India Alliance. Now, the Karnataka Chief Minister further said that only Congress party has the strength to address the problems of this country. So Rahul Gandhi should become the Prime Minister of the country. Anand Vihar Railway Station in New Delhi Railway Station experienced delays and cancellations of several trains due to the dense fog. Adverse weather conditions also led to the diversion of around 60 flights, where low visibility posed challenges for air travel. Indian Navy has unveiled a new design of Admiral's epaulets, showcasing the nation's maritime legacy. Announced by Prime Minister Modi during Navy Day, the new design is drawn from the naval ensign and inspired from Raj Mudra of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Ayodhya is gearing up to extend an extraordinary welcome to the Prime Minister, transforming the city of Ayodhya into a divine spectacle. Streets in the temple town are adorned with flowers. Orange and yellow marigolds enhance the beauty of the redeveloped Rampath, where ornamental lampposts are wrapped in decorative floral arrangements, adding to the grandeur of the preparations. Republic Day preparations too are on full swing, with the rehearsals for parade underway at the India Gate in the national capital. French President Emmanuel Macron has been invited as the guest for the event. The BJP responded to the Aam Aadmi Party's dirty politics charge. BJP has said that the Chief Minister Bhagwant Mann had been shamelessly lying over the matter of the centre not accepting Punjab's tableau for the Republic Day parade. केजरीवाल गणतंत्र दिवस की परेड की झांकी पर अपनी फोटो लगवाना चाहते थे। किसी भी राज्य की झांकी निकलती है उसमें कोई राजनीतिक फोटो नहीं होती है। आपको अपने प्रदेश की संपन्नता दिखानी होती है, अपने प्रदेश के अचीवमेंट दिखाने होते हैं, जो इनके पास नहीं है। वो ये सच नहीं बता रहे कि अरविंद केजरीवाल अपनी फोटो लगवाना चाहते थे। इसी कारण से वो रिजेक्ट हुआ। और जहाँ तक अचीवमेंट्स की बात है तो दिल्ली में क्या दिखाएंगे? एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री, या नकली दवाई जो सरकारी हॉस्पिटल में या मौत का क्लिनिक में बट रही है। All right, the other big story that we're tracking today, Bihar politics, of course, continues to witness a lot of churn. Nitish Kumar was unanimously re-elected as president of Bihar's ruling Janata Dal at a meeting of the party's national executive in Delhi. Bihar chief minister was reappointed minutes after aide Lalan Singh stepped down, ending weeks of frenzied speculation. Of course, Republic TV got you that lead just yesterday. And the big development just comes ahead of 2024 elections. And they have, of course, it's coming in after days of suspense. Lalan Singh has finally stepped down, as it was being speculated. Lalan Singh has stepped down as the president of the JDU. For a second time now, Nitish Kumar is the president of a JDU. So this is the latest we have right now. There are several reactions too that have been coming in from the meeting venue today. Let's take a look at those. अरे धूप चलिए, आज बैठक में अरे वहाँ चलिए ना, धूप में चलिए, धूप में चलिए, धूप में चलिए। हम भी थे वहाँ जब उन्होंने प्रस्ताव दिया था। तो नीतीश कुमार कब कार्यभार संभालेंगे? राष्ट्रीय कुमार जी ने स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया तो ये कहा जाए कि आज से राष्ट्रीय अध्यक्ष अब नीतीश कुमार है। अभी तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, वो अगर इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर देगी तो स्वाभाविक रूप से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। विजय जी, कारण क्या रहे ललन सिंह के इस्तीफे देने? ललन बाबू ने खुद कहा, उन्होंने मीटिंग में कहा कि पहले भी वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था और अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा। इसलिए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो स्वीकार करें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिए। विजय जी, नाराजगी की बात थी ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों के बीच में, क्या वो एक मुख्य वजह रही ललन सिंह के इस्तीफे की? किस चीज की? ललन सिंह के इस्तीफे की मुख्य वजह क्या दोनों के बीच में जो नाराजगी है वो भी एक मुख्य वजह रही? नाराजगी? बिल्कुल। इतना नया शब्द आप कहां से ला रही है? ये इस शब्द का तो कहीं कोई जिक्र नहीं है। नहीं, पहले से तय नहीं था।
चूँकि आदरणीय नेता ललन बाबू ने उन्होंने जाहिर की, चूँकि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे बहुत व्यस्तता है और पार्टी के संगठन पूरे देश में खड़ा करना है, उसमें मैं पूरी समय नहीं दे पाऊंगा। इसलिए सम्मानित नेता नीतीश कुमार जी से आग्रह किए जो आप स्वयं इसको संभालने का काम कीजिए और कर्तव्य ध्वनि से सभी ने स्वागत किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उसे स्वीकार भी करने का किया। अभी नेशनल काउंसिल की बैठक हुई, उसमें मुहर ले जाएगी। एक और बात महेश्वर जी, एक बात लगातार कही जा रही है कि अब बीजेपी भी ये बात खुल करके कह रही है कि जो नज़दीकियां थी लल्लन सिंह की आरजेडी से, वो एक मुख्य कारण रहा क्योंकि नीतीश कुमार नाराज थे इस बात से, उनकी बढ़ती नज़दीकियां आरजेडी से, और वो एक मुख्य कारण था जिसकी वजह से लल्लन सिंह के इस्तीफे की भी चर्चा सुखबुगाहट पटना से लेकर दिल्ली तक काफी दिनों से थी। नहीं, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। कहीं कोई हमारा शीर्ष नेतृत्व न बोला है, न हम लोगों को कोई भी MP MLA बोला है। यह सिर्फ मीडिया की उपज थी। हम लोगों कहीं कोई नहीं थी। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और ललन बाबू में दोनों में इतनी मित्रता है, और जो पार्टी का फाउंडर मेंबर है, दोनों आदमी पार्टी। All right, getting in visuals of Yogi Adityanath, who is in Ayodhya ahead of Prime Minister's visit for the launch of the airport tomorrow. Yesterday we saw him holding meetings. Today again he is on ground reviewing the preparations for tomorrow's event. Remember, there will be rallies and also several meetings of the Prime Minister with officials in Ayodhya, and there will be the inauguration of the sprawling airport in Ayodhya and also the Ayodhya Dham railway station. We're getting in visuals of Yogi Adityanath right now, who is in Ayodhya reviewing all the preparations and ensuring that yesterday all goes well for tomorrow's event. It is to ensure a grand welcome for the Prime Minister in Ayodhya also. And you can see right now he is offering prayers right now in Ayodhya. Yogi Adityanath, the Chief Minister of Uttar Pradesh right now. Earlier we saw him reviewing preparations in the rally ground, and right now he's in a temple. My colleague Priyanka Sharma, tracking on developments right now, is joining us on the phone line. Priyanka, we see Yogi Adityanath now in Ayodhya. He is offering prayers, doing aarti. Tell us more details about this. Well, yes, Rakshita, we have seen how Yogi Adityanath, in fact, had arrived in Ayodhya about an hour ago, and he had taken stock of all the projects that are set to be inaugurated tomorrow by the Prime Minister. He's also gone to the airport. He will be going towards the railway station and the airport, and then also now we are looking at him in the Hanuman Gadi temple as well, carrying out those puja and rituals. And we had also seen a very candid moment of the Chief Minister Yogi Adityanath at the Lata Mangeshkar Chowk, the newly named Lata Mangeshkar Chowk, which apparently has Lata Mangeshkar songs also running, where he had taken a selfie as well and then had met with the officers, had a light moment with them. But all through the day, we will expect that the Chief Minister will be meeting with the officials and taking the review of all of the projects that are in place and how the security arrangements are in place in terms of the Prime Minister's arrival. Because let us tell our viewers that we had also seen how at least 3 DIGs, 17 SPs, 40 ASPs, 82 DSPs had also been deployed just about 24 hours ago. And after that, we have also seen that the RPF had also been deployed in the area as well. And now we are looking at the Chief Minister carrying out the Havan inside of the Hanuman Gadi temple. He will also be going towards the Ram Janmabhoomi temple, is what we've been given to understand. He will also have a meeting with the trustee members as well, is something that we are learning. We had seen how they were going to be meeting, in fact, with the trustees of the Sri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra, the trust that is responsible for the Ram Janmabhoomi temple. And the important decisions that are all set to take place today, because we were being given to understand that there will be a voting that will take place of all of the trust members and the chief priests of the temple, who will get together to decide upon the 51-inch tall idol of Lord Ram that will be selected out of the 3 designs that had been made. And we have seen over the last 1 year as well the entire process that it has taken, right from the very beginning of the sketches being made and then the sketches being zeroed in on with the team, with trustees, the
designers as well. And then, of course, these three sculptors, in fact, being given the task of making the idols of Ram Lala that would also have two characteristics, which is that of divinity and innocence, because it is the Ram Lala, the child form of Lord Ram, that is going to be installed in the Ram Janmabhoomi temple. So these are some of the things that we are seeing as developments, because we will expect that the voting will take place, and post that the Chief Minister Yogi Adityanath may also meet with the trust members as well, and be also briefed about the developments that have taken place today. And of course, another very important part of this meeting is also going to be about how the devotees will be accommodated there at the Ram Janmabhoomi temple, because only the main part of the temple has been completed, Rakshita, we must remember, and the entire pathway towards the temple as to how rituals will be carried out, how the devotees' movement will also be taken into consideration, and how, because post 22nd of January, post the Pran Pratishtha, the authorities are expecting a lot of thousands of devotees, at least 25,000 or so footfall that they are expecting will start to take place in Ayodhya, and that is why these briefings are all the more important. And we are looking at the Chief Minister right now here in Ayodhya, personally overlooking each and every detail of Ayodhya, and specifically to tomorrow when the Prime Minister is going to be here at the airport, first landing at the airport, at the Ayodhya airport, and then going towards the railway station that has been renamed from Ayodhya Junction to Ayodhya Dham. He will also be flagging off several of the trains, the Vande Bharat train specifically, which will be the highlight, and the frequency of the trains that will also be added to the Ayodhya Dham railway station. Post that, he will of course be going to the airport and once again inaugurating the newly named airport as well. And the frequency of the flights that have also been attached is going to be another highlight of the tomorrow's event, when we will see passengers, in fact, from Ayodhya already having booked several of their flights right after the Prime Minister leaves around 1 p.m. Is what we've been given to understand. So this is the kind of enthusiasm, the excitement, and the arrangements that we see on the ground. And rightly so, the Chief Minister being in Ayodhya, he was expected to be here even yesterday, because he was expected to carry out the review meetings 2 days prior to the Prime Minister's arrival, that is yesterday and today as well. But because of a bad weather condition, he could not take off from Lucknow and could not arrive in Ayodhya on time. And then that's why he had to carry out the entire review meeting virtually yesterday. We had seen at around 5 p.m. when the review meeting had been carried out with the authorities, with the collector, the mayor, and also with the trust members as well. And now today we are looking at the Chief Minister Yogi Adityanath having arrived in Ayodhya and having met with the authorities, having met with the officials. Gujarat is where ideas turn into industries. And for 2 decades, Vibrant Gujarat Global Summit has been the dynamic platform from where the state's entrepreneurial spirit emerges. Through its visionary startup policy, combined with strategic initiatives like Gujarat Startup and Innovation Scheme, iHub and iCreate, Gujarat has propelled its startups to new heights and is today recognized as the startup capital of India. And with that distinction, Gujarat's transformative vision for emerging entrepreneurs is propelling India towards achieving the vision of Viksit Bharat at 2047. Be a part of Gujarat's progressive startup ecosystem at Vibrant Gujarat Global Summit 2024. Gateway to the future. हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी
सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। 3 से 4 व्हीलर में अपग्रेड तो करना है, पर इसमें से क्या खास बात है? इसमें एक खासियत हो तो बताएं। टाटा इस गोल्ड पेट्रोल CX में है दमदार इंजन जो दे बढ़िया पिकअप, बड़ी और स्ट्रॉन्ग लोड बॉडी और मेंटेनेंस एकदम कम। तो अब सोचो, समझो और टाटा इस गोल्ड पेट्रोल CX लो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रत्येक भर्ती प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ संपन्न हो रही है। प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोग और भर्ती बोर्ड तेजी के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने से आज प्रदेश के युवाओं का सरकारी नौकरी का सपना साकार हो रहा है। मेरा नाम राम प्रकाश शर्मा है। मुझे जेल विभाग में जॉब मिली है, जेल वार्डर के पद पे हूँ मैं। हम लोगों ने सबसे पहले लिखित परीक्षा दी है, उसके बाद में कट ऑफ मेरिट वगैरह क्लियर करने के बाद में फिर हमने शारीरिक दक्षता क्लियर करी, DBPST हुआ, उसके बाद में फिर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, फिर मेरिट हुई, इसके बाद हम यहाँ आए। रोजगार सृजन की दिशा में नित नए कदम बढ़ा रही योगी सरकार ने प्रदेश में सरकारी नौकरी की नियुक्ति में एक रिकॉर्ड कायम किया है। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। Massive breakthrough after 12 years. Centre and ULFA to ink a peace deal shortly. Mega reject in the JDU ahead of 2024 elections. Lalan Singh steps down. Nitish Kumar takes over as the chief. India divided over prime ministerial pace hurdle. Siddaramaiah pitches for Rahul Gandhi now. Therefore, they have not been able to come up with logo, with Neta, with Niti. There's only confusion and contradiction in their alliance, and that is what is evident. Sources suggest seat sharing discussion likely in January. BJP fires Indi Jodo Yatra attack. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath Ayodhya takes stock of the preparedness. And all eyes on Prime Minister's mega Ayodhya visit tomorrow, set to unveil mega projects ahead of inauguration.
So it's going to be a historic peace deal, viewers, that is going to be signed in a short while from now. This is the center and the ULFA deal that is going to be signed today. It's a big breakthrough that is going to take place after 12 long years for the benefit of the people of Assam, and not just Assam, of course, also for the people of the Northeast. Now, the United Liberation Front of Assam, that is ULFA, the pro-talk faction of the ULFA, and the center is going to sign this peace deal. And we will get you more details about this in a short while from now. It is going to, of course, bring a significant breakthrough in the decades-old problem of insurgency in the Northeast. It's a tripartite peace accord between the pro-talks faction, viewers of the ULFA, and the central and Assam governments will be signing this deal today as it aims to end the decades-old insurgency in the state of Assam. For more on this, I'm joined by my colleague Anuruddha from Guwahati. Anuruddha, of course, it's going to be a very historic peace deal, isn't it? Tell us about this deal and quite the key points, as in what is the most important point to actually, it has taken 12 years. We've been, the people of Assam have been struggling, but on the political level also, on the ground level also, there have been various hurdles. But this is going to be a deal that is going to bring about a sense of peace in Assam and in Northeast. Take us through the key details of this accord. Yes, Rakshita, this, if we see at the 12-year context, then it is a very less time compared to the 43-year-long history of violence that the state of Assam has gone through because of insurgency. Starting from 1979 till that, a lot of violence have taken place in the state of Assam, and in most of them the ULFA is directly or indirectly linked. And as there has been several attempts also in the past to bring ULFA on the table of talks, there was a lack in political will to reach out a conclusive solution, which we have witnessed very lately in terms of the Northeast or Assam is concerned. When in 2011 the talks were formally initiated, there was no certain agenda or point of talks on which the talks can proceed. It was only in the year 2016-17 when a formal agreement was made as to on what basis the talks will proceed between the center, the government and the government of Assam and the ULFA. It is going to be a tripartite talk, and that is the reason why a tripartite agreement was in 16-17, so that the talks can proceed in a conclusive manner, so that a solution can be achieved. And after a lot of deliberation, all these three parties went through. Today we are here at a historic moment when the peace agreement will be inked formally between the government of India, the government of Assam and the ULFA. And there are a lot of aspirations for the people of Assam as far as this pact is concerned. Their hopes of each and everyone is very high. But yes, let me tell that as per our sources, many contentious issues such as NRC, such as the citizenship issues have been kept out of this agreement to be inked today. However, on the development front, there are many new things which the state of Assam will be witnessing. We are getting to know from our sources that a mega financial package for the state of Assam, a mega development package is likely to be announced. Apart from that, there are several agendas on which talks had taken place. This also include the scheduled tribe status for the 6 ethnic communities of the state, and these are all aspirations and what the people of the state have been expecting to hear from today. But yes, in a short while from now, exactly after half an hour, everything will be clear as what the government of
what the government of India and the center have decided on as far as these talks are concerned, and we are hopeful that this talks will bring in a permanent solution to the violence in the region, because ULFA, as far as the ULFA is concerned, ULFA has been one of the oldest outfit in the region, and they have been also one of the major groups, and the peace pact signed between the ULFA and the government of Assam and the central government will pave way for other organizations, other smaller organizations to join the table of talks with the government, so that a permanent solution can be reached not only for the state of Assam but for the entire Northeast. Rakshita. In fact, Anuruddha, we are seeing and we're playing those graphics also where a Prime Minister in his tenure, in the total number of years that he's been a Prime Minister, the Northeast had actually got a lot of push, not just development, but the peace push, which has a lot of challenges. And, be it the Bodo Accord and several other accords that we have just listed out, they have taken place for the benefit of a Northeast. His Act East policy, his Northeast policy has been a very important point of focus of both the governments, be it Modi one, the first term or even this second term. But tell us about why it has taken 12 years, because there have been a lot of challenges on the political front as well, and also from the stakeholders also. So take us through what all has happened up until now, and why did it take 12 long years for this push, for this big breakthrough in Assam? Yes, Rakshita, your question takes me to way back to 2011 when when the ULFA was brought on the table of talks. In the year 2011, when the UPA was in power and the Home Minister of this country was P. Chidambaram, at that time there was a historic blunder that was committed by the center, and it was keeping Paresh Barua completely out of the talks. Later on, though there had been several attempts, though he never joined the table of talks, but if there are viewpoints in Assam that if in 2011 itself a concrete effort was made to bring in Paresh Barua on the table of talks, then things would have been completely different. But yes, even after starting the peace process in 2011 also, only a few meetings actually took place in the state, and there was no concrete meeting which could have led to a positive solution as far as the conflict between the ULFA and the government of India is concerned. And there was no concrete political outreach by the leadership in Delhi in order to pave way for the talks to go for a conclusive solution. But things changed later towards the end of 2015-16, and in 2016 when the center initiated extradition of Anup Sethia from Bangladesh, and eventually after Anup Sethia's deportation from Bangladesh to India, in fact, Prime Minister Narendra Modi also himself thanked Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina for the extradition. And thereafter, after Anup Sethia's arrival from Bangladesh, the talks took a smooth takeoff. And today we are here at this juncture when this historic pact will be signed in Delhi. Rakshita. Right, Anuruddha, of course, it's of course a very significant development that is going to take place, and we will be shortly getting we'll get you more details about that, viewers, in a short while from now, that this deal is going to be signed. The Home Minister will also be present while this peace accord is signed. But right now we'll be moving on to some other news, and if this is the news coming in from Ayodhya, of course, remember Yogi Adityanath, the Chief Minister, is in the temple town of Ayodhya, and he is going to review all the preparations that is going to take place for the events tomorrow. Remember the Ayodhya Dham railway station and the Ayodhya airport, that is the Maharishi
Valmiki Airport in Ayodhya is going to be inaugurated tomorrow, and there is going to be thousands of crore rupees of projects that will be announced by the Prime Minister. So we will get you what the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh had to say ahead of that big event tomorrow. Take a listen in. देखिए, जहाँ जन्मे प्रभु श्री राम, स्वच्छ सुंदर रहे अयोध्या धाम, और जो राम को लाए हैं वह अयोध्या आए हैं, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर स्वच्छ अयोध्या, सुंदर अयोध्या का एक संकल्प जो अयोध्या वासियों ने लिया है, अयोध्या के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लिया है, यहाँ के हमारे महापौर जी, हमारे विधायक जी गणों ने लिया है, हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता यहाँ अयोध्या के पूज्य साधु संत और जनता जनार्दन सब ने लिया है, उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हाँ, और इससे कड़ाके की ठंड, जब लाठियाँ चलती थी, जब गोलियाँ चलती थी, जब जेल भेजा जाता था, तब भी राम भक्त रुकता नहीं था। हम राम भक्त हैं, राम सेवक हैं, कार सेवक हैं, और हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान है, सबको शक्ति प्रदान कर रहे हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। ये आप समझ आओ तो पूरी अतिरुचिर बनाई प्लास्टिक मुक्त अयोध्या को लेकर के हमारे यहाँ नगर निगम में महापौर जी विशेष जो अभियान चला रहे हैं यहाँ पे, उसी का यह भी एक क्रम है। Time for a short break, viewers. On the other side, the Indy remains divided over prime ministerial face hurdle. Siddaramaiah pitches for Rahul Gandhi now. There's a reason why over 200 new age companies scout for talent from our campuses. It's because we've future-proofed our courses with a higher technological baseline, with a thrust on specialized industry skills and tech innovation skills. The Amrita School of Engineering. Tomorrow's engineering today. हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रत्येक भर्ती प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ संपन्न हो रही है। प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोग और भर्ती बोर्ड तेजी के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने से आज प्रदेश के युवाओं का सरकारी नौकरी का सपना साकार हो रहा है। मेरा नाम राम प्रकाश शर्मा है। मुझे जेल विभाग में जॉब मिली है, जेल वार्डर के पद पे हूँ मैं। हम लोगों ने सबसे पहले लिखित परीक्षा दी है, उसके बाद में कट ऑफ मेरिट वगैरह क्लियर करने के बाद में फिर हमने शारीरिक दक्षता क्लियर करी, DVPST हुआ, उसके बाद में फिर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, फिर मेरिट हुई, उसके बाद हम यहाँ आए।
रोजगार सृजन की दिशा में नित नए कदम बढ़ा रही योगी सरकार ने प्रदेश में सरकारी नौकरी की नियुक्ति में एक रिकॉर्ड कायम किया है। जब सेफ बैंकिंग के बिना हो हैकर्स के पास अथॉरिटी, फिर किस बात की साइबर सिक्योरिटी। क्विक हील, आज के लाइफ की प्रायोरिटी साइबर सिक्योरिटी। The latest update in Israel embassy blast case in Delhi. 2 suspects have been identified by the Delhi police. It is known that both the suspects had taken an auto rickshaw from Jammu to Prithviraj Road. Police is investigating the CCTV footage of the entire route. The BJP has once again lashed out at Congress for seeking crowdfunding, saying that after looting the country, Congress is now asking the country for donations. Rahul Gandhi should forget about Nyaya Yatra. He should start Indi Jodo Yatra, because the way in which the alliance partners are fighting. Latest example is the Sanjay Samvad from Maharashtra. Have you heard Sanjay Nirupam say that Uddhav Sena is टूटी हुई party? Who will give them 23 seats? So Sanjay Raut from Uddhav Sena says that Congress has to start from zero. These गांव गली के नेताओं से we do not talk. We talk to leaders in Delhi. Who are these leaders in Maharashtra? And this is the kind of confusion they have even in West Bengal. Trinamool Congress versus Adhir Ranjan Chaudhary. In Uttar Pradesh, Samajwadi Party versus Congress Party. In Punjab, Delhi, Aam Aadmi Party versus Congress Party. In Kerala, Left Party say that Rahul Gandhi should not contest from Wayanad. And we see Congress Party labeling Pinarayi Vijayan as dictator, coward, psychopath. अब पूरे alliance में no mission, no vision. Therefore, they have not been able to come up with logo, with neta, with niti. There's only confusion and contradiction in their alliance, and that is what is evident even now. Cracks continue to widen within opposition bloc. Karnataka Chief Minister and Congress leader Siddaramaiah has pitched Rahul Gandhi as the prime ministerial candidate on behalf of the Indi bloc. The Karnataka Chief Minister also went on to say that the Congress party has the strength to address problems of this country, so Rahul Gandhi should become the prime minister of the country. New Delhi station experienced delays and cancellations of several trains due to dense fog. The adverse weather conditions also led to the diversion of around 60 flights where low visibility posed challenges for air travel. Indian Navy has unveiled the new design of Admiral's epaulets, showcasing the nation's maritime legacy, announced by Prime Minister Narendra Modi during the Navy Day. The new design is drawn from the naval ensign and inspired from Rajmudra of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Ayodhya is gearing up to extend an extraordinary welcome to the Prime Minister, transforming the city into a divine spectacle. Streets in the temple town are adorned with flowers. Orange and yellow marigolds enhance the beauty of the redeveloped Rampath, where ornamental lampposts are wrapped up in decorative floral arrangements, adding to the grandeur of the preparations. Time for a short break. On the other side, mega rejig in JDU ahead of 2024 elections. Lalan Singh steps down. Nitish Kumar takes over as the chief. हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे। भविष्य का भारत आप ही के हाथों में है। अब भी मौका है देश के निर्माण में एकजुट होने का। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए।
करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी, तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2023-24 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। गोल का स्टाइलिश पंखा सिर्फ हवा ही नहीं देता, आपके आलीशान घर के कोने कोने में ठंडी हवा के झोंके पहुंचाता है। कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर को सुंदर बनाएं। 5 स्टार BLDC कूल फैन से बिजली भी बचाएं। समय आ गया है घर के पंखे बदलने का और कूल फैंस घर लाने का। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामिया। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। टाइल्स में इतना गैप लगवा देंगे कोई भी ग्राउट। गलत जवाब। टाइल ग्राउट मतलब SP100 जो जॉइंट को दे अल्टीमेट प्रोटेक्शन। MY के लेटिक्रीट SP100 जोड़ हो तो ऐसा। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। Narasimha Rao, when he was Prime Minister, kept referring to the disputed structure as a mosque. So was that also an attempt to instigate? See, it was always referred to as the disputed structure. It was never referred to as mosque. Till Narasimha Rao said there is a mosque. And then this whole clash of temple versus mosque was built. Muslims versus Hindu was built. Secularism versus nationalism was built. Lalan Singh Yadav, in order to pander to the Muslim vote bank, started saying if more people were required to be killed, then the security forces could have done it. You see, Lalan Singh Yadav became the face of Islamic politics in 1990. He very clearly said that I will not allow Karseva to go on. Still, the Karseviks performed the Karseva and many were killed. People say it is the BJP which did it. It is actually the collective conscience of the Karseviks who believed in drama. They did it. They had nothing against anybody.
Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर